गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा वो फ्लश करना था वगैरह। आज हमारे साथ द अरे मैं थोड़ा फिल्टर ऑन कर देता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ गोस्ट स्टोरीज लाइव with me, Shakib Al Hassan. The Kingpin, also known as Professor X, is not with us today. He's having a party on the next floor. If anybody can confirm कि ऐसा actually हो रहा है, please बता देना. Exactly क्या हो रहा है सुरेश के एरिया में. Cyril, by the way, is on a flight to Bali. Either that or he's drinking barley. मुझे कुछ पता नहीं. If anybody spots Cyril at the airport, go say hi to him. हेलो मॉड्स, हेलो एवरीबॉडी, हेलो बुरगिर बुरगिर लोग. 20 सेकंड भी नहीं हुआ, सब लोग लेट ओपी. कितना स्ट्रेस होता है. टी शर्ट 10 on 10, थैंक यू वेरी मच. ये मैंने नहीं बनाया, दुकान से खरीदा. सो लेट्स गो. गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. यू विल फाइंड. बाल क्यों काटा भाई, बाप रे, नहीं काट सकते क्या? Go to the description of this video and you will find the link to our Zoom room. Come to the waiting room, come hang out, and don't talk to anyone there. We don't know anyone personally over there. Tell us your ghost stories. There needs to be a ghost in the story, and I will be playing all three parts today. So, whenever I behave like an idiot, I will be behaving like Cyril. When I ask questions about Kidar Tha Bhoot, I'm being Suresh. Buy a hair too short. You haven't seen anything yet. अकेले में फटेगी होजे की आज. वाओ. इज am I a balloon? क्या चल रहे भाई. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसा है? नो मुरेश सरन, नो मुरेश सरन. मला माहिती नाही कुठे आहेस तो. वो आ जाएगा, बट डोंट वरी, आ जाएगा थोड़ी देर में. सो लेट अस बिगिन. Someone is supplying meth in the waiting room. I think you mean math, not meth. Wow, good to see you guys all over here. आज एकदम मतलब chill stream. No unnecessary questions. बीच में I might interrupt myself a couple of times, but देखते हैं क्या होता है. So, if you guys are ready, we will also begin. Please drop a ghost emoji. I know it's a little painful, वो ढूंढना पड़ता है, etc. Oh no, कौन है ये? कौन है ये? रूप कथा. हाय, गुड इवनिंग गाइस. मैं थोड़ा फ्रिज में बैठी थी, डीप फ्रीजर में, तो ऐसा हो गया. रूप कथा घोष, थैंक यू. बोनी हो गए, आप कितना स्वीट हो. थैंक यू सो मच. लीव माय बॉडी. हाँ, ओके, लेट्स सी कौन कौन है लाइन पे. हेलो टू हरामी चैट, हेलो टू ऑल द मॉड्स. कैसे हो भाई बहन लोग? अरे एक्चुअली यू ऑल फाउंड द गोस्ट इमोजी, अमेजिंग. व्हाट वेब सीरीज और मूवी आर यू वाचिंग? I watch The Office whenever I want to have a good laugh. Um, I finished, what's that? Some superhero thing on Netflix. I'll figure it out if I Google karte. I have to Google the name of the show. First caller coming in, ladies and gentlemen, Ananya. Ananya, अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा प्लीज. Oh my god. Is she also at the airport with Cyril? मेरे को बहुत डर लगता है आजकल ये सब स्ट्रीमिंग में. अनन्या क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? I can see myself in the stream. Ananya, आ जाओ. This, as you, if you're a long time watcher slash listener of this, she's watching another episode. Cyrus, क्या कर रहे हैं उधर? Okay, Ananya, was great watching your screen from all the way here. Just send me the links. मैं check करेगा. Putting Ananya in the waiting room. This is a good way to start the stream. If you guys are long time watchers, you know that this is the best way to start. Somebody has given their story a 4 on 10 in the waiting room. Sir, why will I pull you in if you're giving yourself a 4 on 10? Please at least lie about the ratings. Trisha, इधर no ragging है ना, ये तुम्हारा college नहीं है. Rohan ji, imagine if the whole stream tonight is just this. Hello, hello, आपका कैमरा ऑन करो. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो, दिखाई नहीं दे रहा है. रोहन जी. Backfired on him, he was muted. Who was muted? पर सब लोग म्यूट में ही आते हैं. सब लोग म्यूट में आते हैं. हाँ, रोहन. कैसा है रोहन?
Ooh, रोहन तो डारगी. हेलो हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? एकदम मस्त बढ़िया। क्या चल रहा है? मस्त बढ़िया एकदम। थोड़ा लूज हो जा. हा ऐसा है. बस एकदम बढ़िया. बढ़िया है. ऑलराइट. रोहन किधर से? पुणे। पुणे. काय चालू यस। तिकडे? रेडी ना? एकदम। हाँ एकदम जोर से स्टोरी भी। बोलने का, थोड़ा आपका ऑडियो थोड़ा कम है. ओके एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, आप वो सब कर देना रोहन, तब तक मैं थोड़ा पिघल जाती हूँ. तब तक कार्तिक says entry fee for today's stream and belated happy birthday to the one and only MC Hamster. देखा, सिरिल इज ऑन बर्थडे लीव. लीव माय बॉडी. ओ हाय रोहन, कैसे हैं आप? हाँ गुड टू हैव यू मजा आ ऑन. रहा है क्या आवाज? यू हैव अ घोस्ट स्टोरी? हाँ यस यस। ओके. एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली घोस्ट लेकिन हाँ स्कैरी है। स्कैरी है, बट यस। भूत का एंगल नहीं है. स्ट्रीम वो का भी है। नाम चेंज करना पड़ेगा. ओके, स्टार्ट स्टार्ट सर, शुरू कर दीजिए सर, इधर कुछ भी हाँ। चलता है. डोंट वरी. सो एक्चुअली ये लॉकडाउन से पहले का था। मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग एक चेन स्टोर मॉल में हम लोग काम करते थे। ओके. तो क्या हुआ था कि हम लोगों का ऐसा शिफ्ट होता था सुबह और शाम का। तो व्हाट हैपन कि पहले एक दो दिन हम लोगों को एक आदमी दिखता था जो ऐसे हमारे स्टोर के बाहर ऐसा बस आके खड़ा रहता था हम्म. सिर्फ, और अंदर जाके सिर्फ ऐसा स्टेयर करता था कि सिर्फ ऐसा देखता था अंदर क्या है क्या नहीं है। हम लोग फिर उसको एक हम्म. दिन मतलब दो तीन दिन ऐसा हुआ चलता रहा। फिर हम लोगों में से मेरा फ्रेंड उसको बाहर जाके उसको एक बार ने कैसा बोला कि क्या है व्हाट डू यू वांट, कि क्या चाहिए क्या नहीं। सो ही जस्ट सेड नथिंग। ही जस्ट लुक्ड एट हिम, स्माइल, नथिंग, मतलब सिर्फ एक स्माइल दिया और वहां से चला गया। फिर चला गया. फिर बाद में वो एक दो दिन फिर से नहीं आया। फिर ओके. हमारा हमारा शिफ्ट चेंज हुआ था तो हम लोग एक दिन से लास्ट एक थोड़ा लेट लेट आवर्स के लिए हम लोग काम कर रहे थे। सो हमारा लास्ट शिफ्ट था तो हम लोग लास्ट में सब बंद वगैरह करके हम लोग जा रहे थे। और हम लोग सब पार्किंग लॉट से जाने वाले थे तो मतलब स्टोर वगैरह सब बंद करके पार्किंग लॉट में से हम लोग नीचे जाके बैक डोर से हम लोग जाने वाले थे। हम्म. तो मुझे वॉशरूम यूज़ करना था। सो ठीक है. मैं उधर गया। और मतलब ऐसा रात का टाइम तो कोई भी नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खाली वगैरह था। ओके. तो मैं अंदर गया, अपना सब काम वगैरह किया। आई हर्ड कि समवन जस्ट केम इनसाइड। और वो ऐसा ऐसा राउंड मार रहा था वॉशरूम में। अंदर की बाहर? हाँ अंदर अंदर अंदर। अंदर. मैं वॉशरूम के ओके. अंदर था और वो, और जनरली इंसान अगर वॉशरूम में आए तो फिर क्या होता है, वो हाथ वगैरह धोता है या फिर ऐसा कुछ ना कुछ आवाज़ तो आता है। करेक्ट. ही जस्ट केम इनसाइड, चल रहा था। आई कैन हियर हिज फुटस्टेप्स स्लोली स्लोली कमिंग टुवर्ड्स माई डोर। सो मैं एक सेकेंड मतलब ऐसा सिर्फ सोच रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आई हर्ड नॉक ऑन माई डोर कि अरे. भाई एक सेकंड मैं शॉक हो गया, मतलब क्या है कौन है ये क्या नहीं। टक टक. तो फिर मैं दो सेकंड के लिए रुका, मैं जवाब देने वाला था, सीधा ही वो बैंग करने लगा। अरे, टक टक से ठक ठक ठक. हाँ सीधा जोर से। फिर बाद में मैं अभी डर गया कि भाई ये क्या हो गया, कौन है अचानक से भाई सीधा इधर आके मेरे इधर ये दरवाज़ा बैंग वगैरह करने लगा करेक्ट. है। सो लकीली एक और बार दरवाज़ा खुला, आवाज़ आया और फिर वो था मेरे दोस्त की। भाई बोला कि क्या कर रहा है, जल्दी आ जा, लेट हो रहा है, हम लोगों को घर जाना है। और फिर और एक अंदर इंसान आ गया। ही स्टार्टेड वॉशिंग हिज हैंड्स। और फिर जब मैंने अपना दरवाज़ा खोला, आई केम आउटसाइड में वॉशरूम की, मैंने एक इंसान को जोर से सब बाहर निकलते हुए देखा मेरे दोस्त के बाजू से। ओके. हाँ। सो मैंने उसको पूछा बाद में कि भाई कोई भाई ये गया था क्या घाय गए में, बोला हाँ बस एक इंसान चला गया। फिर मैं उसको बोला कि चलो चलो जल्दी घर से निकलते हैं। तो उसका घर मतलब उसका घर थोड़ा नज़दीकी था तो हम लोगों ने डिसाइड किया थोड़ा लेट वगैरह हो गया है तो हम लोग तेरे घर पे रुक जाते हैं। सो हम लोग तो थोड़ा सा नज़दीक था तो हम लोग सब वॉक करके जा रहे थे। और उसका वॉकिंग डिस्टेंस पे था। सो हम लोग एक छोटे से गली से हम लोग
जाने वाले थे, और आजू बाजू में थोड़ा ऐसा बहुत पेड़ वगैरह था और पूरा ऐसा साइलेंस था। ओके। सो हम लोग जा रहे थे और सब साइलेंस था ना, तो हमें पता चल रहा था कि हमारे आगे पीछे कोई है कोई नहीं है। सो मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई हमारे पीछे से कोई आ रहा है। मैंने इग्नोर किया, मैंने को लगा कि हाँ कोई इंसान वगैरह होगा, कोई आ रहा होगा। हम्म। तो पीछे से वो आ तो रहा था, हल्के से वैसे देखा, मुझे लगा, मैंने देखा कि हाँ भाई पीछे एक इंसान है करके। लेकिन हम लोग चल रहे थे, हम लोग एक सेकंड के लिए रुके तो वो भी रुका। मैंने मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मतलब पीछे कोई है क्या, मतलब क्या क्या कुछ सीन है क्या। हम लोगों ने पीछे देखा, वो खड़ा था सामने, ही वॉज फेसिंग अस। हम लोगों ने उधर मतलब ऐसे एक सेकंड के लिए रुक गए, भाई क्या है ये, कौन है ये। हम लोग उसको पूछने वाले थे, लेकिन आजू बाजू से ऐसे दो चार कुत्ते से भाग के चले गए। कुत्ते भाग के चले गए हाँ, कुत्ते भाग के चले वही गए। टाइम पे? वही टाइम पे ओके। हम दोनों की भी फट गई, लेकिन हम हम्म। लोग को एक लाउड आवाज सुनाया, कुछ ऐसा जो बड़ा मेटल वगैरह गिरता है ना, गिरता है ना, तो ठंग। तो टक हाँ, टक, ठक ठक ठक, अभी टंग। हाँ मेटल का ऐसा आवाज सुना। हम्म। तो मैंने जैसे ऐसा इधर उधर देखा, फिर नीचे भी कुछ ऐसा शाइन वगैरह हुआ, तो मैंने देखा तो उधर नाइफ था। हाँ, हाँ, चाकू। बुचर नाइफ था, अच्छा लंबा बड़ा बुचर नाइफ था। हम लोग की फट गई। हम लोग उधर से जो भागे, व्हाट द हेल? और से भाग गए उधर से। और उधर से एक लिंक, एक मेन रोड था। तो लकीली मतलब हमारा लक था, बहुत बढ़िया लक था, तो उधर एक पुलिस की पेट्रोलिंग कार थी। हम लोग मेन रोड हाँ। से एक टच है जो अंदर से रोड जाता है, तो हम लोग वो अंदर वाले रोड से जा रहे थे जो पूरा सुनसान होता है। तो हम लोग भाग भाग के फिर मेन रोड पे चले गए। फिर और आप उधर अरेस्ट हो गए कि क्या हुआ पुलिस आने के बाद? मैं नहीं। तो हम लोगों ने उन लोगों को बताया कि ये ऐसा ऐसा सीन हुआ। फिर हम लोगों को लकीली वो ऑफिसर ने हम लोगों को घर पे छोड़ा। फिर हम लोगों को उसने एक इंसान का फोटो दिखाया। तो बताया कि ये अभी थोड़े दिन पहले ही मेंटल असाइलम से भाग गया है, ये वो करके। अच्छा। फिर बाद में 2 हफ्ते बाद हमें पता चला कि हाँ भाई ये हो गया फिर से अरेस्ट वगैरह। तो वो भूत नहीं था मतलब, और आपको लगा कि भूत वैसा नहीं था। भूत है क्योंकि उनका लेकिन था तो स्केरी ना। टेक्निक अच्छा था। एनीवे, रोहन था जी तो थैंक स्केरी। यू वेरी मच हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। हमारा चैट आपको अभी रेटिंग देंगे और आपका सफर इधर ही खत्म। थैंक यू रोहन, हैव अ गुड वन। दैट इज स्कैरी दो, आई मीन नॉट अ घोस्ट स्टोरी बट वेरी स्कैरी। टेक केयर बॉय। अभी दूसरा स्ट्रीम शुरू करना पड़ेगा। क्या क्या कमेंट्स लगा रहे तुम लोग, प्लीज मुझे हंसाओ मत बीच बीच में। 1K वॉचिंग, वेरी नाइस। ये लोग सब सोच रहे कि हम ये मैं क्या देख रहा हूँ और ये मैं किधर फंस गया। If you just joined us, you are watching the ghost story sessions. Sometimes it's a good, sometimes it's a she, कुछ भी हो सकता है। क्या बोरिंग स्टार्ट है यार। 1 on 10, that's a one more than I would give it, नहीं अच्छा था, स्टोरी काफी स्कैरी था, but there's no ghost angle, so उसके लिए 10 points minus, you get some -10 for me, but still pretty scary to have that happen to you. Let's keep moving on. क्या टाइम पास है। Oh, okay, okay. चलो चलो, some this guy make a big claim, हाँ, बड़ा बड़ा claim। 10 on 10 वर्ली हॉरर स्टोरी, वर्ली वो भी इधर ही, about 10 kilometers, बड़ी इधर ही है। ठीक है अंकित, तू लड़, अंकित लड़, लड़ ले। रवि जी, आपको हम अंदर लेके आए हैं, आइए रवि जी। रवि जी शुड, ओ नाइस। रवि, यू पुटिंग योर टूथपेस्ट ऑन द स्क्रीन। Ravi, I hope you're not using that as toothpaste, okay? You're dying on the inside. I died on the inside a long time ago. कैसे बातें कर रहे हैं आप? बहुत टाइम पहले मर चुका था। Reincarnation story, मेटा, एक सेकंड। रिपोर्ट टू जूम, मेरे को अपना टूथपेस्ट दिखा रहा है। Stupid, waste of time. All right, let's keep going. अरे ये कौन है? नहीं नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ओए, अरे बाबा, सर, ओए तालियां भाई और बहनों, हमारे साथ सर अपना ऑडियो ऑन कीजिए। अपने को करना है। सॉरी, दिस इज सुरेश। हाफ एन आवर बिफोर द स्ट्रीम स्टार्ट, दिस इज व्हाट आई डू विद हिम।
हाँ सर, मैं आपको कर रहा हूँ आपको हाईजैक। I'm अरे really sorry about this. Hey, what's हाय up? सुरेश जी, हाउ आर यू? Hi, परिणीति छोकरी जी, छोकरा जी। अरे क्या कर रहे हैं आप? लगता है पार्टी शुरू हो गया है। पार्टी काफी टाइम से शुरू हो गया है और मैं लेमन जूस पी रहा हूँ। वेरी तो नाइस, वेरी नाइस। नहीं सुरेश जी, धीर शमशेर says what's the meaning of your name? होजे वो पता नहीं, मुझे क्या पता है। मयूर अय्यर, थैंक यू सो मच। सुरेश जी के लिए सब आई थिंक पीचेस डाल सकते हैं आप चैट में। आयु सुरेश, मैंने नहीं सुरेश जी का बड़ा भाई। अब मैं एक्चुअली उनका चाचा हूँ। इस वक्त सुरेश हेलो जी सर। बेहोश पड़े हैं। हेलो हेलो हेलो। क्या सीन है सुरेश? पार्टी गोइंग ऑन? सुरेश का Yeah, we कंसिस्टेंसी just had a देखो ही। small get together. We just got a small get together. That's why I've been slightly tardy in joining this stream. But टाडी। uh, tardy, yeah, sorry, टाडी, लाडी because डाडी। I'm handsome tardy. क्या सॉलिड सुरेश, बाप रे। Thank you, bro. मस्त मस्त। आर यू डूइंग अ फिल्म I वेयर just यू want आर to लाइक ask, द? I just want to ask everyone, should I keep this beard or should I remove it? अरे today's poll of the day on ghost stories is कि should Suresh keep this beard or not? But Suresh got this wild sort of like Kingpin gets just got out of jail kind of vibe going on, or or it's like, you know how Taken the film, but the father kills everyone and all that kind of vibe going on. That's me. That's me. बड़े क्यूट लग रहे हैं आप सर, सुरेश जी। मेरा ये Oh, आइस thank क्यूब you. मेल्ट हो रहा है इधर आपको देख के, क्या बताऊं आपको। Oh, yeah. सुरेश जी लुकिंग लाइक अमित जी from अस्त्र। Oh, yeah, man. That's a good thing. क्या लुक है सुरेश, लुकिंग। मैं काफी Basically, अट्रैक्ट हो गया आपके आपके ठीक है, पास। थैंक यू सर। तो मैं बहुत दिल से तहे दिल से माफी चाहता हूँ कि मैं ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या? आप सॉरी। तालियां सुरेश जी आपका अटेंडेंस देने के लिए। बिग राउंड ऑफ मैं अप्लॉज। फिर मैं फिर से इससे बीच में आ जाऊंगा जब मैं ज्यादा हाई स्पिरिट्स में रहूंगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे बाप रे। इजाजत दीजिए। क्या इजाजत इजाजत? इजाजत। इजाजत। ठीक है, वन लेस ड्रिंक फॉर माय फ्रेंड सुरेश मेनन प्लीज। I'll see you all soon. चलो टेक केयर सुरेश जी, लव यू। बाय परिणीति जी, बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप आए तो। आप मैं पास आऊंगा, फिर से आए। आऊंगा। आते रहना, आप अंदर नहीं लेके आएंगे, आई मीन लेके आएंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बाय सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय। सुरेश जी अटेंडेंस देने के लिए आए थे। अभिनय रेड्डी से सुरेश लुकिंग रियल हॉट विद स्टबल। बर्निंग स्टबल। पायल जोशी, थैंक यू सो मच। कितने स्वीट से बड़े बड़े क्यूट लोग हैं तुम लोग। God, what was I doing? Oh, sorry, I had no idea what was happening. Okay, let's keep going. Suresh man is still in the waiting room though. That's funny. All right. Daisy say Suresh Heisenberg. Yeah, dude, if we do a Desi Breaking Bad where they are smuggling bhang and all. Suresh जी चलते आएगा। हाइजनबर्ग, सुरेश हाइजनबर्ग। सृष्टि जी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा, तब तक हम आपको अंदर नहीं लेके आ सकते। विल यू बी टेकिंग वॉलंटियर पैनलिस्ट? आई हैव एक्चुअली मूव द पैनल अराउंड, तो आज शायद नहीं करेंगे बट करते रहेंगे ना बीच में। आप आ जाओ, जिसको भी पैनलिस्ट बनना है जस्ट टाइप पैनलिस्ट इन योर नेम ऑन जूम एंड लेके आना। नाउ अ गुड स्टोरी प्लीज, ऐसा कभी नहीं बोलने का। सृष्टि जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहा हूँ, आप जीत चुके हैं। प्लीज पुट योर कैमरा ऑन। All right, no problem. Shrishti ji being very, very stubborn with us today. Let's see who else we have. We'll make it a fight between the panelists. I can't play Jesse, man. Maybe I could, I don't know. All right, Kelshi, Konkan. Whoever puts their camera on first, आपको हम लेके आएंगे. Big ups for doing this. Thank you. To the small downspeed too. Thank you. I'm here till Thursday. Panelist. Arey, don't type panelist in the YouTube chat. In your in the Zoom, your Zoom name, put panelist there. Kelshi. अरे आ गए आप। कलशी ने सृष्टि जी को डिफीट कर चुका है। Hey, this guy reminds me so much of Tejas. All right, sir. कोंकण हॉरर स्टोरी आपका स्वागत। हाय होजे। कैसे है भाई? बस सब ठीक।
किधर से? To be completely honest, I mean, like, मतलब जब सब लोग बोलते थे कि I mean, like, feeling kind of nervous. So, expressing that right now. अरे अभी तो वो लोग है भी नहीं, तो नो नीड टू टेक टेंशन, मैं ही हूँ. जस्ट इमेजिन टॉकिंग टू शाकिब ब्रो. To be completely honest, like before starting the ghost stories, I would like to say, I mean, like, I started watching this stream from I think May, Oh, and unfortunate. yeah, and Are you, have you recovered actually, now? the true story. This is true story. I mean, like, I had to take a break for like 1 or 2 months, like between that because I was getting a Me bit too. affected. But then again, Really, you were getting fried with the ghost stories, is it? yeah, I mean, it was affecting me. I mean, but then again, yeah, I got the courage, and I am starting. I mean, like from July I started, then I'm at 44th stream now. Oh shit, that's Yeah, crazy. See, this is why I don't listen to any of the stories, because I don't want them to affect me later. I'm just kidding. All right, go for it, man. You have a horror story to tell yeah, us? yeah. So funny enough, I mean, like this, and then this actually happened. This actually happened in the month of June, and this June. Okay. Okay, so I think so 3rd or 4th June, I guess. So I mean, like we have planned the family get together and picnic. It was first Ganpati Pune, but then again we started, like I think Keshi is a town in Konkan. It's like deep proper Konkan, Okay. like when you say, yeah. So and my Masi suggested that it's on the way only. We were going from Pune to like Ganpati Pune, and she said that it's in between the way. Huh. So we said, oh yeah, why not? We will visit that for the day, and I mean, like we'll spend some like 8-10 hours, and then we will leave because there's also a beach, and it was a family picnic. So yeah, we had small children with us, so yeah, it would be Okay. fun for them. Yeah. So and we were definitely aware of what I mean, like uh, Konkan is quite, I mean, like famous for, Lots of like. stories from there, huh? Exactly. Yeah. So फिर? So we were aware of that, and we were kind of having fun, a kind of that fun element also. So yeah, it's okay, fine. It's going good, and all we enjoyed. I mean, like during the daytime, we enjoyed a lot and all, and even in the evening, na, we went to the beach, and it was all good. At five, there was one like peculiar thing that happened, and that was like at 5:30 or 6 or so. It now this I'll tell you, this is a completely like a remote village. I mean, like there is not, this is proper like smack dab into the Konkan, so Okay. proper Konkan. Okay, so and this is proper village. There's nothing like a lot of like a town scene happening, like बहुत ज्यादा मतलब दुकान है या फिर ऐसे बहुत मतलब ऐसे बहुत हलचल है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है. It's समझ गया. right. सन्नाटा है हाँ वहाँ हाँ, पे, बहुत दूर है. हाँ. काफी सन्नाटा है मतलब. I mean, that was quite eerie enough, but it's okay, fine. We didn't think of it that much. But at 5:50 or 5 or 5:50, na, in the whole area, uh, they started playing Ram Raksha. Okay. Yeah, yeah, and that's weird. Okay, we also didn't think of it that much. But then again, like my master and were a bit skeptical. So वहां से फिर निकल गए around 7 or so during daytime only, and we were going for go to the jungle area. So at 10 or 10:30, we finished the lunch. Yeah, at 10:30, we will finish the lunch, and we set foot towards, I mean, like towards Ganpati Pura, and I think it would take, we were going to reach at 1:30 or so. All right. Okay. Yeah, I know it was pretty late. We kind of mismanaged that. फिर. Yeah, and we were like 15 20 people. No, 15 people. वो फोर्स की बस आती है ना, मिनी बस, Hmm. in that. Yeah. So we set for the Ganpatipura route, and yeah, it was pretty dark, like, and proper jungle area. And jungle means proper is like कि दो 2-3 किलोमीटर के बाद एक घर दिखेगा, और वो भी मतलब पूरे ऐसे अंधेरे में सिर्फ एक लाइट जलता रहेगा. आई मीन लाइक विद द earlier your background used to be like that. There was one house, and it या was इसके like, पीछे है. yeah. या वही. Yeah, so हाँ. it was like kind of that, but even less light. All right, so it was like that. And और वो भी मतलब हम गाड़ी से जा रहे हैं, and फिर भी it was like after 10-20 minutes we are seeing one house. It was that sparse looking. I'm like, and no other vehicle, just our vehicle. All right, Hmm. so yeah, we were going and going, and yeah, I was sitting in the quite in the like at the back seat, like 5 rows over there, and I was at fourth or some row. I don't know, around maybe
11:30 or maybe 12:30. I don't know the exact time because I was kind of dozing off because it was all घाटी road and all. So मतलब मुझे मतलब थोड़ा सा कि like kind of disturbed off खाना हुआ था काफी मतलब जोरदार मतलब वो थोड़ी नींद वगैरह it was kicking in. But this my uncle, yeah, both my uncles with my elder Masi's like husband were sitting in the front rows, and आवाज आ रहा है ना मुझसे? हाँ हाँ Hello? मैं वही हाँ, सुन रहा हूँ. yeah. Yeah, so they were sitting in the front row, and my bhabhi and yeah, again one of my masi was were sitting in the front only. So at around 12 to 12:30, they kind of saw, and this like they saw an auto with all LED lighting and all, right? Oh, RGB lighting in the auto. Very Yeah, nice. exactly. Like that is like in that location, coming from the opposite direction. Okay, and it was to be completely honest, it was completely weird because we were in the middle of a jungle and nothing was there. I mean, like apart from our bus, nothing, not a single vehicle was there, Yeah, and like you that said. auto was coming. So the whole setting of this thing was not at all. I mean, like proper कुछ था ही नहीं मतलब ऐसे कि मतलब हाँ sir. it doesn't make any sense. Okay, so okay, fine, they got away. Okay, they and my like I said, so and only like 4 people out of the 15 people saw this auto. Like I told you, like the uncle who was sitting uh, in the front, and also हाँ. the Masi and Bhabhi, and थोड़ा also जल्दी है there. बाबा हम लोग पनवेल पहुंच Oh रहे हैं yeah, इसलिए sure. the other callers लोग मेरे को somebody just send me a middle finger emoji. हाँ. Yeah. Okay, so yeah, they saw the auto, and but and they were quite. I mean, like it was quite not Weird. not the natural phenomenon like you see an auto in such cases and all. Yeah. So yeah, but when we reached Ganpatipure, and then everyone started discussing what actually happened. So the thing is, like both my uncles saw a woman, like a kind of a healthy woman who was like into an avari and all, who was sitting like this in an auto. I mean, like auto के बीच में ऐसे बैठी हुई है. She was like that. But at the same time, my bhabi and Masi did see the auto, but did see the woman. हाँ. Exactly. और वो ऑटो में एलईडी लाइट्स था, आरजीबी लाइटिंग पूरा था. मतलब पूरा झगमग ऐसे पूरा रहता है ना. It was that kind of an auto. And even in the back, like the second row थी बस की, मतलब मिनी बस की. तो even my another Masi, she also saw the auto. I mean, like from going past the window and all. पर But वो औरत उसके नहीं बाजू वाले दिखी. जो मतलब मामी बैठी थी तो उन्होंने नहीं देखा, उनको नहीं दिखा. Wow. Yeah, Amazing. yeah, and I that's the thing. that's crazy. I Either they know, had but some that's the amazing thing. technology in that rickshaw, or but some of them didn't see the rickshaw at all. No, that's what I'm saying कि और ऐसा भी नहीं था कि मतलब even if I am sitting in the back in the fifth row, but मैं ऐसे कैसे दिखेगा तो मेरे को सामने का जो मतलब विंडो है वो दिखेगा, तो मेरे को So, कहाँ से आ रहा है वो so दिखेगा. the ghost was just flying like that in the air when they saw. I'm I sorry. don't know. I mean, Freaked and out. it was crazy because I mean, like the chacha and both the chachas saw the lady who was sitting in like बिल्कुल like this, मतलब ऐसे Wild. सेकंड में बैठते हैं ना. So they saw her, but these two ladies Insane. didn't see her. And there was one thing which I would like to mention. I mean, this is like apart from the story, is like ki, when I was in that jungle, and I am someone who has traveled in night and all, but I am also someone who is kind of fascinated by night driving and traveling at night and all, and it kind of gives me a really cool and बहुत ही शांत लगता है. It's chill, So yeah. I'm kind of sucker for that. But when I was in that jungle now, so and I also like kind of what can I say? I mean, like I sense a lot of like vibes. You can Oh. understand? Yeah. Yeah. So when I was in that jungle, so I'll tell you, believe me, it was really beautiful. I think it was completely dark, and there were fireflies on the trees and all, and there were so many fireflies that it was so beautiful. Like a tree is lighted with like green LEDs or something like that. Yeah. But then there was some weird sense of like fear in at the back of my head that if I step out of the van right now, I won't be alive. As in, you get the feeling like I'm you get feeling the like that feeling, right now. Yeah. I yeah. understand what you're saying. But if you go into No, a but dark you get room the feeling that also, jungle में जाओगे तो वैसे you no, that's what instinctively I'm you saying. feel Ki like that. that is different. But when you had a killer scene, someone is trying to, that is different thing. Yeah, and when you get to a like, yeah, I understand that कि तुम मतलब कोई अंधेरे जगह में जाओगे तुमको थोड़ा डर लगेगा and all.
but I was surrounded by a whole bunch of people. Crazy. Yeah, so I Freaky. know it. Yeah, so But that nothing was that. happened, ना And कुछ हुआ नहीं ना, thankfully. no, kuch hua nahi. And that's what I was saying. Ki even the one uncle who did saw the the woman and all, he हाँ. didn't say a single thing. I mean, like till the whole trip was over the 2 days, and when we reach home, he said, "Yes, I did saw, but we are not supposed to talk about it at that time." ओ अच्छा, बाद में Yes, बात करेंगे, दिन yeah, में बात yeah, करेंगे. exactly. I am like your uncle only then. चलो, thank you buddy. Pretty freaky and By the way, I unnerving was a great story. fan. I mean, like to be completely honest, this was the first time I actually इधर downloaded आओ. Zoom, and I just like got in and yeah. गलत किया तुमने, इधर आओ. Have a good one buddy. Yes, Catch you. thanks. Cheers, Bye cheers. bye. Bye bye. Very freaky and unnerving. Doing Cyrus's part. ओ किधर हुआ था ये जो आप गाड़ी चला रहे थे? अरे, I should have asked him when he was there. That was Suresh and आप क्या खा रहे Cyril? No, that's Suresh only. ठीक है. Yes, I only asked him. Thank you very much. Guys, don't forget to drop your rating for that story if you feel like it, even if you don't feel like it. I mean, नहीं तो क्या कर रहे हैं आप इधर? हाँ? अरे, panelist number 2, ठीक है? We have some panelists. We don't have a story, but we have a panelist on. ठीक है? Hello, panelist 002. We will be going all the way up to panelist 007. Very nice. Clipper Flipper really enjoyed it. Cyril, मैंने हक दिया. Yes, दोपहर को, अभी नहीं. Panelist number 2, please put your camera on. Meanwhile, मैं next storyteller को लेके आ रहा हूँ. Oh my god, a sad horror story. Great. ये पैनलिस्ट ही भूत है क्या? क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? Oh my god, what is that? Is there a... Yeah, ये मैं भी देख रहा हूँ भाई. क्या कर रहे हैं? ठीक है. पैनलिस्ट, आप अपना घर में लाइट तो ऑन करो. हाँ? MS is coming on. Hi, bae. Give me shout out Atharva from Panvel. Hi, Atharva. How are you? कैसे हैं आप? Leave my body. Arey, there were some more people. I'm so sorry. I missed your super chats, guys. Arey, I'm so sorry. I missed your super chats, guys. माफ कीजिएगा. एक दो जन आपको ढेर सारा प्यार और किसी आपके लिए किसी मुइंग MSG आप है क्या? MS ठीक है. MS को आन दे. अरे अंकित said he had a very scary story. अंकित को लेके आता. अंकित का एकदम super fast internet. Okay. MS, we will MSU. अंकित लड़. Yes, self rating मैं करेगा. Sorry, मैं भूल गया. आज मैं अकेला है ना. मैं ये सब बटन दबा रहा हूँ. Like someone said, I'm focusing on the stories for a change. अंकित भाई, कसं काय? All right. एक सेकंड ना, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए वो बटन दबाया मैंने. आपको भी एक बटन दबाना पड़ेगा उधर से. अंकित. I'm visible? Yes, you are visible. You're audible. Spotify, not premium. How are you doing, Hoezaay? पैसा बचाओ. कैसा है? I'm doing good, man. Chilling. क्या सीन है? किधर से? Hoezaay, I'm from Pune. Oh. I've been listening to Kaan Masti since a really long time. My brother and I. Dear. Oh no. My parents heard us listen to Kaan Masti the other day. हेलो, मेरा नाम सुरेश है. मैं होजे को नहीं जानता हूँ. कोई वो नहीं. मैं शाकिब हूँ एक्चुअली. सबको बता रहे. बाप रे. What did your parents? No, they were pretty chill about it. They were just like, "क्या सुन रहा है ये?" You've been thrown out of the house though. I can tell you're in your neighbor's house now. All right. Yes. Somebody so saying I started visibility index low in your house. There's fog. All right. Go for it, Ankit. Today's a Pune themed live stream today. Right. Ankit, go for it. So जरा माहौल create करते हैं. Oh no, Sabha is leaving Cyril for Ankit now. This is terrible. Cyril will feel very bad. But anyway, Ankit, go for it. So Hoezaay, before I tell the story, let me make it very clear. ये story exist करता है बाहर. अगर आप permission दोगे, only then will I continue because I don't claim for this to be original. कर दो. Where did you hear it from? Maybe you can cite the source. Yeah, so I am huge into ghost stories and podcasts. So एक podcast है Mr. Ballin करके.
John Bolin उनका नाम है, and he continuously keeps on diving into these true crime ghost story sort of encounters Okay. where the lines are really blurry, where you don't know if it's a human being or a supernatural entity at play. Okay. तो वैसा टाइप का ये स्टोरी है, थोड़ा क्रीपी है, मैं काफी आसानी से डरता हूँ नहीं, so I would like to believe it's a fairly scary story. ठीक है, सुनाइए सर. The stage is all yours. Rating? I would give it a good 7, but I would like to believe it's slightly better, but I'm being modest about it. ठीक है, fair enough. शुरू कीजिए, आपका सफर यहीं पे शुरू होता है. I'll just be right back. मैं थोड़ा अपना चाय लेके आ रहा हूँ. But I'm listening, sir. These are Yes. wireless. Go for it. So Jose, मैं बस ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन से नरेट कर रहा हूँ जैसे कि मेरे साथ हुआ है, but it's not that way. So I'll be talking about the character as I went through it. Okay. थोड़ा पर्सनल टच आएगा, मजा आएगा सबको. ठीक है. Right. Hey, क्या कर दिया? Sorry, give me a second. What the hell did I do? Yeah. Stop pressing the buttons. Ready, sir? शुरू कीजिएगा. So Jose, this is the story of my friend and I. We were extremely close, and we would love to go, skiing and snow capping down at the Himalayas. We were extremely tight, and our bond of friendship decided on the fact that we were into skiing. It was an adventure sport. It was extremely exciting, a lot of fun. And every year, my friend's father had a cabin up there. So my friend, his father, and I, all three of us would go together to ski here up in the Himalayas. Okay, great atmosphere, very isolated, and the cabin had a very creepy sense to it. To describe the cabin to you, it had 2 floors. The first floor was where me and my friend would sleep, and the second floor, the father had his own room and he would sleep. What happened was, 2 years ago approximately, this father had a terrible accident and he passed away on the spot. Okay. Damn. What this did was it completely shattered my friend, because he was extremely close to his father, had a very special relationship with him. The wife completely broke down. It was a love marriage and she was completely invested in this man, and they were not expecting for something like this to happen. An extremely shocking incident. What this also led on to was that my friend and I, we stopped going for skis. We stopped going to that place in the Himalayas because it had such a memory of him, and he was such an avid skier as well, that we decided just out of respect in his memory to stop it. But 2 to 3 years, passed by, and this friend of mine only came to me and he said, you know what? My mom said it's time we get back to doing what we love best. In the next 2 to 3 years, you will be going to college as well. We don't have a lot of time together. Let's go back to skiing. And I was fairly reluctant towards it because of whatever had happened. The memory of it was so vivid and clear. I still reluctantly said yes. Both of us, now this time accompanied with his mother, have gone up to this cabin. This cabin has been left untouched for 2 years. It's completely isolated. We had to carry our own logs of wood, our firework, our food, and obviously all the skiing equipment that we had. What we decided to do is we went skiing during the day, and during the night time, we would spend our time in the cabin. What would happen in the cabin is that small, very weird incidences started happening. Something as simple as I would leave a cup on the kitchen cabinet, but the cup would go missing. I would leave my phone for charging, and my phone would not be present at the same place that I last left it. Now, these are all very generic incidences. It can also happen that I am not aware, I am not in the right state of mind, and I have done something subconsciously. So you wouldn't read too much into all of this. Suddenly, while going to sleep, now remember, I told you about the layout of this place, right? 2 floors. Now, the mother decided to take the father's room. The both of us were sleeping on the ground floor. So it is very clear that there is a distance between the father's room and our room. Our room is also locked. 10. Every time, we would feel like a presence is hovering outside. A presence in the sense, you could feel the doors go out when the windows are completely packed. You would feel a sense that somebody's standing outside, almost waiting in anticipation for you to open the door. But whenever we would open the door, nobody would be visible outside. Suddenly, in the middle of the night, I went up to use the washroom and I saw the father standing in front of me. Now, mind you, I wasn't intoxicated. I was completely in touch with my senses, and I very clearly saw this man, not a silhouette, not a ghost, but the presence, the sheer presence of this friend's father standing, looking at me dead in the eye and smiling like there is no tomorrow. This was a very scary and creepy feeling because this man started approaching me. Out of sheer fear of what I was witnessing, I closed my eyes, ran up to my bed and went off to sleep.
The next morning, I woke up and I narrated this story to my friend. My friend was oddly fine with it, almost as if he's expecting like something like this is going to happen. He smiled at me about it and made fun of me, just like boys do, take each other for granted and say, this is something very stupid and juvenile that you're experiencing. Don't read too much into it. Let's go for another ski. We went skiing, we came back again, and that night was the night that changed everything for me. I took my blanket, I went off to sleep, turned the lights off, and turned to the left side of my bed, only to see the father lying beside me in the bed and his hand covering me from the side, looking at me dead in the eye and saying, "You had fun today, huh? It was a good time." Now, mind you, again, it's very important to establish that this was not a one-off incident that I had experienced. This was not something that had not happened before. This was the second time in 2 consecutive nights that this was happening. So there was a sense of pattern here. Now I got shit scared. I immediately went up to the mother, knocked on her room and said, "I'm feeling uncomfortable. I think I have a problem, but I really feel like leaving and I really want to leave." The mother turned the lights on, sat me down, had a conversation with me, made me a hot cup of coffee, and asked me for the reason of my absolute absurd reaction to all of this. I told her what I had experienced because I felt like I needed to be honest with her. I owed this to her. She's my best friend's mother. And she looked at me and said the scariest thing I've ever heard. She said, "Oh, so you saw him too." And that's where I was like, what is going on? She said, she started talking casually as if this is something that happens in their lives. She said that, "Listen, ever since he's passed, there's this continuous sense of presence I feel around him. I feel that he's genuinely still with us. And he is not trying to harm us, but his presence is definitely around." And I feel that is the scariest kind of ghost story, because then there's nothing you can do about these kind of ghosts, right? You're not sitting here with an intention letter saying that are you here for good or bad, but their sheer presence and they make sure that you feel that is incredibly creepy. Wow. Objects being moved from one place to the other and things like that. So That is a very creepy story. But you said you found this, you heard this story on Mr. Bollin's channel. yeah, Mr. Bollin, Stan, Please John Bollin. drop a link to his channel and this story in the comments when you get a chance. Definitely. But very well narrated, sir. Like Thank someone you so said, much, हम sir. लोग माहौल के लिए आए हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन सा माहौल kitchen. But Ankit, very well narrated, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, Jose. Thank you so Talia, much for very having me. creepy. I wish the ghosts would just do ghost stuff and not like chat with you in bed and all. Yeah, That I was a know. bit Na? creepy. Especially it's a very inappropriate moment if it's your father's friend also lying He's beside like, you. yes, uncle, I had a lot of fun. Take care. Have a good night. Take care, Jose. Thank you Take so care, much for buddy. having me. Bye bye. Cheers, cheers. Wow, that was extremely creepy, guys. I have broken the timer, so I'm unable to do that. I'll count in my head. My time देखेगा इधर. नहीं, it was a good narration. Please, आप ऐसा ही आप थोड़ा आपको मजा नहीं आया इसलिए आप बोल रहे हो ऐसा नहीं बोलेंगे प्लीज इतना एफर्ट डाला उसने 7.5 on 10. But Mr. Bollin definitely needs to get credit for that. Very creepy story. Oh my god, what the hell? The part where the father says, "Did you have fun?" I was like, what? Why? Panelist with good internet connection. Wow, that's nice. That's so that's so thoughtful. All right, we have our panelists coming in with a good internet connection. It is a picture of their belly button. And a Missouri story haunting is happening. Oh my god. I feel like he's going to tell me that I've been served a notice. Hello, sir. I'll ask you to unmute. We have our first panelist for the day, sitting in for Mr. Cyril Diabrio or for Suresh. Good evening, sir. Good evening. How are you? Very good. How are you, sir? I'm doing well. I'm doing well. You're You gonna be didn't a- have a panelist. You didn't have a panelist Yeah, today, so I I'm- thought I should join. Panelist today. But welcome, sir. What is your name? My name is Ashwin. Ashwin. Talia, bhai aur behno, आज का panelist Okay. Ashwin के लिए. Ashwin, you seem to have the same couch as me. That's amazing. I love it.
Missouri hotel haunting scary. Welcome, sir. आपका ऑडियो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ? Or has it? Are you making an Instagram reel currently, sir? I am unable to hear you. Wow, Ashwin is such a good panelist. He muted himself. क्या बात है, sir? क्या बात है? Arey, here we go. Missouri hotel story is about to begin. Imagine Suresh puts the stream on. He's like, "अरे मैं क्या कर रहा हूँ उधर?" All right. Missouri hotel haunting scary. Good evening. Welcome. Good evening, good evening. Hoezaay. Okay, big fan, small fan, Ketan fan. I'm all sorts of fans. Welcome to the Right. stream. And where are you calling us from? It looks like it's So I'm morning calling there. from, I'm calling from Chicago. Oh, And Chicago. Nice. Chicago. And then Go it's for it. actually you air at like 11 a.m. here for us, which is a good Oh, time on a Saturday. I'm so sorry. So you're listening to ghost stories at 11 in the morning. In full daylight. I'm listening to ghost stories in full daylight. That's very funny. But All right, go for it. You have a story to tell us? yes. Take it away. So sure. Yeah. So I'm gonna rate the story. It's gonna be a 6.57. Nice. And then okay. the story happened with a friend of mine, and I'm like kind of the side character that Okay. comes in the second half. All right. And then, so this was way back in the 11th and 12th, vacation ke baad. So not vacation ke baad, like during the vacation, so we just, we lived in the same colony, we kind of split up, go to different places. My friend went to to Missouri for a holiday with his family. And basically he goes, and then like a week later, he comes back and he's all disgruntled and unhappy. He's like, "Arey yaar, kya bakwas vacation tha." So, and I was like, "Bata kya hua?" And then he basically goes on to explain that, "Acha, we were at this hotel. It was like a H-shaped hotel, बहुत पुराना था. It was not one of your fancier hotels. My dad likes like these older ancient hotels. But yeah, full time there was an eerie feeling in the hotel. There were barely any tourists there. Like it was also low on staff. Like we would always be attended to by this like one creepy Igor-looking attendant over there. So like, and then he would like, sometimes he would listen to us, sometimes he wouldn't. Like we'd call in for room service, he wouldn't respond, and sometimes like you'd have to catch him, and like, so service was really bad. He says that raat ko I remember when I would be sleeping, that suddenly blast the AC and be like super cold, and we had to like get out and get somebody to like turn the AC off, but we'd get no response, and then suddenly they turn off the AC. He said that we would call for room service and then nobody would respond. He's like, so meko utke kitni baar khud, like I had to walk back through this big lobby to the like through the lobby to the main concierge corridor or whatever, get water myself. Ek baar to like I was walking past the restaurant and then I heard like music playing on the inside, and I heard chitter chatter like in the corridors, like these hotel ka staff people would like just be loitering around and stuff. So like it was very uncomfortable overall. And then this one time he said, I heard like people crying or wailing in the night. So he was like, kafi odd tha. And then the whole experience was like really not good. So I'm like, yeah, so that's done. And like we fast forward a week, and I think it's my birthday or something, and I get a book, right, as a gift. The book's called Ghost Stories by Ruskin Bond. Okay. I open the book. First page, it says The Savoy. Like that's just this first chapter is called The Savoy. And I start reading it. And it started explaining this hotel in Missouri that was H-shaped in the shape of a H. It was a very old hotel. It's a British colonial hotel. Oh shit! The story that they were reading, you were in the same place. No, my friend visited and he told me the story once he got back. And here I am a week later reading about a similar hotel on the first page. Got it. Sorry. All right. Right. Yeah, and then What? I called him. I called him immediately, and I'm like, bro, I think I'm reading like a ghost story about the hotel that you just visited sometime back. And then he came over immediately, and we finished the story together. So we go on to read that it's a colonial British headquarters. It used to be in the 1900s. Supposedly in 1916, a female British officer was poisoned and killed over there, and they never found the killer. They say that her spirit still haunts the corridors of that hotel, and then there's been several sightings and spottings of the spirit. Like now, he didn't see anything. So we go on to read, and I've got it written down here, that wherever the spirit's presence is felt, there's like temperature fluctuations. Like people feel very cold or very hot.
which ties back to his AC blasting in the middle of the night. And then Oh, said they say that in the middle of the night, guests can hear the hotel, like the piano playing in the grand ballroom, which was now converted to the restaurant, which he used to walk by damn. and listen to music inside, which he interpreted as like masti kar raha rahega koi, like hotel ka staff andar masti kar raha. And then he said that you can hear whispers in the corridor in the middle of the night, which is again him thinking that it was chitter chatter by the hotel staff. By this point, he had already come back, right? He was not, as in Yeah, the he was experience back in was Mumbai done. with me. Okay. Experience was done. So he was there. He experienced the haunting. He's come back to Mumbai, Shit. and we're reading the story at my place in Mumbai. And now, and then obviously there's also the wailing and the crying in the night, which he also heard. So now this guy is realizing that he has experienced a haunting in retrospect. And his face just goes pale, and he's got goosebumps all over his hand. And he's like, "Bhai, I need like a day or two to sleep this off. It's insane." Oh, So like, yeah, shit. that's my story. That was And then 22, bro. That was totally 22. That's man. So and now, then now whenever he goes to a hotel, he calls you first and says, "Bhai, wo book check karo. Can you tell check me out उसमें कुछ है?" Oh, dude, yeah. crazy. So here's a funny joke. मैं जब सोच रहा था उसके बारे में, like later we made jokes about it. I was like, it's funny how like none of the creepy hotel stuff translated to him as a haunting or something scary. At that He was just time. translating, yeah, at that time. He was translating it as bad hotel service. Like I'm wondering if he actually saw this spirit also. He'd be like, ये क्या आंटी float कर रही है बीच में And corridor के the रात ghosts में are ना? like, ये कैसा आदमी है, हम लोग कब से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे वो. Anyway, freaky story. Thank you so much, buddy. Have a good one. Thanks. Cheers. Great story. That was a good one. Best of luck to your friend. अश्विन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? आपका क्या फीलिंग्स एज अ पैनलिस्ट? ये स्टोरी सुन के मुझे वो मूवी है ना द शाइनिंग, उसकी याद आ रही है, बिकॉज उसमें भी बॉलरूम है, उसमें भी होटल है, ऐसी क्रीपी चीजें होती है उसके अंदर, But that was more काफी of a thriller. सिमिलरिटी. No ghosts in that, ना? In Shining में ghost नहीं था ना? शाइनिंग में घोस्ट नहीं था, उन्होंने ऐसा वो पागल प्रेजेंस लग रही. जैसा दिखाया था, स्टैनली क्यूब्रिक ने अडेप्ट किया था. क्या बात है सर. योर इवन सुरेश का जो वो इंटरनल नॉलेज आप भी निकाल रहे हैं. दिस इज अमेजिंग. क्या नकल कर रहे हैं आप सर. माइंड ब्लोइंग. थैंक यू, थैंक बिग यू. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अश्विन पैनलिस्ट. अश्विन, आप कहाँ हो इस वक्त? somebody said वो didn't ask Ashwin where he's calling from. किधर हो आप अश्विन? मैं ऑटावा के पास में, कनाडा में. Oh, अच्छा. We are doing an NRI/Pune stream today. So Yeah. Canada, Chicago, and come to Pune. हमारा next caller is from Pune saying it's an 8 on 10. बोलने में क्या जाता है अश्विन? हाँ, या क्या जाता है? अरे वाओ, नाइस. अभी नहा के आया है मेरा दोस्त. पुणे रियल लाइफ स्टोरी. वेलकम buddy. Just gonna unmute you. Hello. Hi, Hoezaay. Hi. Yeah, I've been putting things in the chat. मैं सबसे पूछ रहा था कि help me get in the Zoom. Bro, you And sound yeah. just like somebody I know. His name is Rian. Oh my god, you sound exactly like him. I'm saying this now Oh, so wow. I can take this bit and send it to him and say कि भाई क्यों आया था. Anyway, पुणे से आप पुणे में ही हैं इस वक्त? नहीं, इस वक्त मैं सिंसिनाटी में हूँ. So I'm pursuing a क्या बात PhD है. here. Yeah. Next caller is But, going to be Donald Trump at this rate. हाँ, यहाँ पे सुबह है. अभी मैंने शिकागो से एक स्टोरी सुनी. उनके यहाँ भी सुबह थी, मेरे यहाँ भी सुबह है. ठीक है, सुनाइए सर. और थोड़ा जोर से. आपकी आवाज थोड़ा कम है. Oh, okay. All right. So I will do this in Hindi and English if जो possible. आपको कंफर्टेबल लगता है. I think Okay. हिंदी में ज्यादा मजा आएगा. Go for it. Okay. तो ये स्टोरी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई है. We were together for engineering in Pune. तो वो दोस्त एक्चुअली मुंबई से है और ये उसके गर्लफ्रेंड के साथ हुआ है. So when he came to Pune, he got into a relationship with a girl और वो आर्ट्स कॉलेज से थी. So उसका और इंजीनियरिंग का ज्यादा कनेक्शन नहीं था, तो हम उससे ज्यादा मिलते नहीं थे. Got it. So she was always kind of a mystery type of girl for us. But she was beautiful. That's what we knew. कि वो दिखने में बहुत अच्छी, उसने फोटोज दिखाए थे. अच्छा. And she was from Bengal. So Pune में, if you know, there are a lot of let's say students that come from all over India. Yeah. तो वो
वो बंगाल से यहाँ रहने आई थी एंड फर्स्ट सेमेस्टर शी डिडंट रियली हैव अ गुड प्लेस टू स्टे. उसे जहाँ भी जगह मिली रूममेट्स के साथ वो रहने लगी. लेकिन इन द सेकेंड सेमेस्टर शी गॉट अ पार्ट टाइम जॉब. फिर शी स्टार्टेड अर्निंग समथिंग और फिर उसने एक 1 रूम किचन फ्लैट ले लिया. Okay. ओके, सो इमेजिन द सेटिंग कि 1 रूम किचन फ्लैट है. देर इज अ हॉल जहाँ पे उसका पूरा फर्नीचर है और उसके पीछे किचन है. ओके, not that difficult to imagine. Got it. So yeah, that's the setting. और उसने एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी. सो माय फ्रेंड और वो दोनों पार्टी में गए थे. और उनके साथ एक 4-5 अलग अलग ग्रुप्स भी उस पार्टी में थे. सो देयर वर लाइक 10 to 15 people in the party and they partied hard till 12-1 in the morning. और बाद में एक एक करके सब घर जाने लगे. ओके, so there was this one guy who was drunk out of his mind. So he was not able to I mean no one was ready to just let him go home. So so they all suggested कि तू वहीं पे सो जा. मेरे पास एक कंबल है, मेरे पास एक चादर है. So I'll just put that down for you और तू वहीं पे सो जा. और he was almost drunk. So she said that okay, let him sleep here. I will sleep on the couch. और वो नीचे बिस्तर पे सो जाएगा. So that's the setting. एक के बाद 2 बजे, 2 के बाद 3 बजे और 3 बजे वो अचानक से उठ के खड़ा हो गया और वो उसे बोलने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी के अभी भुर्जी खानी है. एंड दिस वाज इन द मिडल ऑफ द नाइट. शी हैड नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग. शी वाज स्टिल इन स्लीप. तो उसने उठ के उसे बोला कि अभी भुर्जी क्यों खानी है, हमारे पास पिज्जा पड़ा है, तो वो उठा ले और वो खा ले, मैं गर्म करके देती हूँ. बट ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि नहीं, मुझे भुर्जी ही खानी है, मुझे भुर्जी ही खानी है, मुझे तलब लगी है, ऐसा ऐसा बोलने लगा. And then she was like, okay, I have Maggie. Maybe you want something warm, so I'll get you some Maggie. But he was very insistent, and there was some kind of fear and rage in his eyes. तो Okay. वो देख के उस लड़की की भी she was freaked out. तो वो बोली कि ठीक है, तुझे भुर्जी खानी है तो हम भुर्जी खाने जाते हैं, कहाँ जाने. तो वो बोला कि तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे एक जो गली है, उस गली के एंड में एक भुर्जी वाला है जो रात तक खड़ा रहता है, तो मुझे उसकी भुर्जी बहुत पसंद है. Oh yeah. मैं वहां से भुर्जी खाऊंगा और घर चला जाऊंगा, तू फिर वापस अकेली घर आ जा. सो एट दिस पॉइंट शी वाज लाइक ओके फक इट, I'll go with this. तो वो उसे जल्दी से लेके in an instant. So this was like just in a matter of 30 seconds. वो उठा और उसे लेके बाहर चला गया. Now she lived on 8th floor और वहां से they got into a lift. They went down at the ground floor. और जैसे ही लिफ्ट खुली, जैसे ही उसे पता चला कि we are in safety now, उसने उसे बताया कि जल्दी से जल्दी पुलिस को फोन कर. मैं जब तेरे बेड के सामने सो रहा था और मैंने जब साइड बदली, तब तेरे बेड के नीचे मुझे एक बड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाई दिया जो और एक मेरा ही था. आदमी व्हाट Yeah, उसका it खुद was का my रिफ्लेक्शन reflection. बेड के Yeah, नीचे. but that reflection was from a blade. So there was a guy अच्छा. with a blade sitting beneath the bed. yes I know this story. ये वाला पता है. बुर्जीर, काफी बुर्जीर हो गया सर. Interesting. तो उन they had burji or not? नहीं खाया. So yeah, so the way it goes was they called the police. The police came back. I mean, sorry, the police came for the investigation, and they they all had actually burji. found a guy there. हाँ, correct. Or that guy was actually going to. He was stalking her for several days. He Correct. got a key to her house. Yeah. And he was going to assault her that night. I've heard this story, but without the burjir. I've heard it Okay. with different like burgir and pisgir and all. Anyway, Yeah. sir, thank you so much for sharing that with us. Thank you. Very creepy. Thank you, Hoezaay.
comes back from time to time. Have a good one, sir. Yes. आपको भी पता है बुर्जीर के बारे में. उस दिन डूइंग रीरन्स मैंने नहीं किया. ऑल्सो बाय द वे अश्विन ने डिस्कनेक्ट नहीं किया. I thought he had left, so I disconnected him. It would have been funnier if he left by himself. But anyway, that's very funny. Okay, moving on to our next panelist. Don't forget to hit like and subscribe. Of course, there's no reason to, but it would be great if you could. अरे just finished his taxes and now he's like my ghost story बताएगा. क्या बात है? क्या vibe था? Timing, sir. Connecting to audio, yes, connected. Ask him to unmute. Yes. Hi. Hi, Huku. Hi, sir. How are you? Hey Kus- man, hi. Nice कैसा काय? talk to you. Nice to talk to you too. एकदम मस्त, अभी मस्त. किधर से भाई? So I am actually in Pune right now. Oh, I was just lovely. listening to you. I was just listening to your feed. I just stopped it. I was wondering when I was able to get in line. Yeah. So आप आ गए सर. आप रेडी हो? सांस लो, टेंशन मत लो. We are बहुत टाइम है. और वो बाकी great. दो बेवकूफ लोग वो भी नहीं है आज. I don't mean Ashwin, not Ashwin. I meant Cyril and Suresh. Yeah, तो he has हाँ. his birthday, right? या इससे बोला गया है. Okay, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है. great. बट तो बताओ सर क्या है आपका स्टोरी. कितना Yeah, so रेटिंग देंगे आप? मैं उसको रेटिंग दूंगा. The incident which happened, I'll rate it 8 out of 10. 8 out of 10. Wow, distinction. Yeah, you be the judge. ठीक I'll है. say you be the judge. ठीक है? ठीक है. So the story goes like this. I was in engineering back in 2012. I graduated from Nasik. I was in a college that is under Pune University, and I was doing my engineering there. So her engineering college में there is a ghost story that prevails. Yeah, hostel में रहता ही है. Yeah. So there was a similar kind of story which I had heard from a few of my colleagues. I'll tell you the story first, and then I'll tell you what incident happened with me. ठीक है. So the story goes like this: that there was a guy. तो हॉस्टल में वन रूम में 4 लोग रहते थे. तो apparently on one particular day nobody was there in the person's room, और he was a senior. उनका नाम अहमद था. तो हम लोग उनको अहमद भाई बोलते थे. अहमद भाई कैसे हो, सब ठीक? तो आई गॉट टू नो कि उनके रूम में जो रहते थे, अहमद भाई ने उनको बताया था कि उनके साथ एक किस्सा हुआ था. He was just casually laying down in his room. There was nobody in his room at that point of time. Maybe it was 8 or 9 o'clock. और यूजुअली सैटरडे को हॉस्टल में लाइट चली जाती थी. आफ्टर लाइक 5 or 6 PM 1-2 घंटे के लिए लाइट जाती थी, एंड देन इट यूज्ड टू कम बैक. सो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, शाम के टाइम में ही वाज चिलिंग इन द हॉस्टल. बॉयज हॉस्टल था अपना, एंड द डोर वाज क्लोज्ड, and he was just chilling, listening to music, and somehow he felt something. And what he described was, he thought that somebody was sitting by his feet. वो एकदम edge पे, बिस्तर के edge पे somebody was sitting. He could feel it. तो उन्होंने कहा, अरे भाई कैसे हो? And suddenly he felt that the person stood up and left the room without saying anything. So he got up and he went to the door, and what he realized was door was closed. This was a simple incident that I remembered. किसी ने मुझे बोला तो I can distinctly remember each and every detail because I am usually very into the ghost stories. So उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. He left the hostel, and I came down with the other guys. I used to live in the same room. So ऐसा उन्होंने बताया था. I was like, maybe हुआ होगा, maybe नहीं होगा, I don't know. So I'll tell you the layout room का कैसा था. There were 4 steel cots, 1 2 3 4 line से arranged थे, so that we could get a large surface area सोने के लिए सबके. So 4 जन लोग सोए हुए थे. I just remember कि it was around 2 AM in the night.
I woke up, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो I somehow it came into my head that whatever had happened with this Ahmed guy. So I was just imagining कि मान लो कि दो ghost वैसे आए और एक मेरे इस दोस्त के बाजू में आके सो गया और एक मेरे इस दोस्त के बाजू में आके सो गया. And this I was just imagining out of my head. ठीक है? I was just Intrusive thoughts. intrusive thoughts. Yeah. I was just imagining कि ये एक इधर आके सो गया और एक इधर आके सो गया तो क्या होगा. And then I suddenly realized कि साला इन दोनों घोस्ट के बीच में तो मैं रहेगा. And then I was like अबे ये सब मत सोच, leave it, just leave it, ऐसे मत सोच. और मेरे बेड के ठीक ऊपर में there was a rope जिसपे हम लोग कपड़े उपड़े सुखा देते हैं and there was a towel there. ठीक है. Okay. I just thought कि मान लो ये towel मेरे ऊपर अगर गिर जाए अभी तो. I just had a absurd wild thought कि मान लो अगर ये गिर जाए तो. And this was just after I had imagined about those two ghosts. And I had stopped thinking and I just thought कि मान लो अगर ये गिर गया तो क्या होगा. And I shit you not, that towel dropped on my chest. I shit you not. और ऐसा जब हुआ मेरी सांस रुक गई थी. I couldn't breathe for almost half a minute to a minute. I was shit scared. मैं चुपचाप उठा, टॉवल को रोप पे डाला, ना बेटा सो जा. I just don't want to think anything right now. And this happened with me when I was in third year in my college. सुबह उठ के मैंने बताया, it was all casual conversation with other guys. But just imagine the moment that you are thinking something and it suddenly you happens. think and it happens. ऐसा भी नहीं कि कुछ किसी के साथ कुछ हो, किसी के साथ कुछ हो. तुम्हारे साथ ही towel just dropped on your chest and your heart was like exploding at that time. You scare the crap out of yourself. Either Yeah, that I or was you've scared. developed some kind of powers. You're able to move towels. That's your superpower. You're a towel man. Tual आदमी. Oh God. Yeah, Okay. this was a. But कुछ I हुआ mean, नहीं ना? नहीं कुछ हुआ Okay, नहीं. This it's was all in kind the of a mind. story that all in the mind. I could tell people कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, but मेरे लिए it was scary. When I tell to somebody, everybody is like, यार तू ना ऐसे, ये सब ऐसे होते रहता है. But try imagining अगर आपके साथ हो, you're Yeah, you're yeah. really It's a shit crazy scared at that coincidence. moment. Almost like Yeah, those 1 in a million chance sort of things happening. yeah. But you did it, sir. You must, every night I want you now to look at a towel and say, wonder if this is going to fall on me. And if you can do this 4 times in a row, then we need to talk. Take care, buddy. Have a Take good care, one. man. Great story. Bye. Take care. Bye bye. Wow. What is happening? That's insane. Mr. Cyril, Mrs. Cyril has sent me a message saying he's in the waiting room. Ullu banaya mere ko. Just as I pulled him in, he disappeared. If anybody is at the airport right now, the international airport, and you see a person who looks like Antonio Banderas and Robert Pattinson had a child, it's Cyril. Go say hi to him. Oh, hi. Add panelists with good story. It's me. मैं पक्का exit नहीं करूँगा and video off भी नहीं करूँगा. My gosh, we're getting what's that? Tenders for the panelists. Leave my body. अरे आप लोग क्या कर रहे हैं इधर? Let's see who's next. Panelists 2, take me in again. Let's bring the panelists in. We'll bring them in. We'll just bring in our somebody panelists with geo fiber. Are you trying to tell me that you have good connection? Cyril Diabs, क्या बात है? Now we see the cops at the airport basically arresting Cyril the moment this video comes on. Let's see if he comes on. बाप रे कितने लोगों को पैनलिस्ट बनना है. That's funny. अरे टाइम किधर जा रहा है भाई? 49 minutes left for this stream to end. Thank you everyone who's been here with this stream, even though आज सिर्फ मैं ही हूँ. कौन है मैं ही हूँ. अरे good evening. Hello auntie. Wow. Are you using the 2G network? Could have asked them for the Wi-Fi password. It looks like he's in the lounge or something. He just doesn't want to ask them for the password. Mega Chand. Mega re Mega. Thank you so much. Leave my body. Cyril, we're watching you in 2 frames per second. Of course, your computer is capable of doing that much only, but I know you're on your phone. Yeah. For people who enjoy watching Cyril like this, I'll leave him on the screen. Cyril, your
stuttering. शिस्ती जी, कहाँ पर? He's 5 kbps people. Yes, most of us are 2 kbps people. Now Cyril thinks that by putting his camera on and off, उसका इंटरनेट ठीक हो जाएगा. पीयूष कुमार, मैं सबको लेके आ रहा हूँ अंदर. Happy birthday, Cyril. If you're reading the chat, Cyril, jump into the chat. If your internet is not working. अरे, I was like, ये Cyril को क्या हो गया भाई? पीयूष जी, क्या setup है sir? Piyush and Cyril both using the same internet connection. I hope not. पीयूष जी, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं. सबको अनम्यूट कर रहे हैं. Hi. Whoa. We got an 8K audio feed. Wow, that's I don't know amazing. if it's 8K or something, but yeah, I hope it's nice. How's it going, Piyush? Welcome. And with us, of course, Mrs. Cyril Diabs. Talia, everyone. Round of applause. Happy birthday to Day you. to you. Happy Happy birthday. birthday to Toast, you. happy birthday. Born in Cyril. the... Thank you. Thank you, Piyush. Piyush, I love your background. Very background. You like my background? It's virtual as well. I like a Cyril trying to be involved from the airport. Thanks. क्या आदमी है? Airport? This is my hall, Oh, Hoezaay ji. sorry, it's your home, your bathroom area. Piyush ji, the Okay, stage is Piyush all ji. yours. Cyril, thanks for joining us. I know you're doing Yeah. your best. Piyush ji, welcome. किधर से? Okay, yeah. Where are you मैं calling दिल्ली us? से हूँ. Welcome. And क्या रेटिंग देंगे आप अपना स्टोरी को? मैं अपनी तरफ से तो 10 out of 10 दूंगा. बाकी Amazing. depends on people how they take it. नहीं, but sir, appraisal में even I used to put 10 on 10. They never gave me the Yeah, appraisal exactly. though, but still. Anyway, sir, before you start, do you have your own channel or a podcast or something? Yes, Please drop it actually, in the comments so people can come check it out. Or tell us yeah, about it. I'll do that. I have like posted quite messages, in the chat as well. ठीक है. मैं दोबारा कर दूंगा थोड़ी देर में. ठीक है सर. हाँ. शुरू कर दीजिए आप अपना स्टोरी. Yeah, so ये स्टोरी एक्चुअली मेरे साथ ही हुई है. I used to live in Mumbai long time back. सबको I don't know, लोगों को मालूम होगा जो मुंबई में रहते हैं. गोकुल धाम was considered to be haunted. If Okay. if you have any idea, like वहाँ पे रात को ऑटोज वगैरह जाने के लिए, टैक्सीज वगैरह जाने के लिए मना कर देते थे. We don't want to go there because it's not nice. There were a couple of buildings, the tall buildings, they were scared to roam underneath it. They were scared that something will fall on their head or something, Okay. There's some cases happened over there, so a lot of people didn't go. तो गोरेगांव में जगह है गोकुल धाम. सबको मालूम होगा वो हाँ. तारक मेहता का उल्टा चश्मा, राइट? तो Yeah. एक तो वहाँ पे ही हम रहते थे. सोसाइटी थी. मैं बहुत पहले रहा तो नाम भूल गया मैं. तो what happened was my dad was in bank, right? So we decided to like हम लोग ट्रांसफर हुए थे, तो we were just looking for a house to live in, like for a rent. And my dad was I think everyone's dad is like very economical, they want to get the cheapest, Of course. and so we came across a house in Gokuldam. वहाँ पे हमने एक अपार्टमेंट देखा. एक वहाँ पे क्या था कि it was quite big. And also again, like mostly horror stories में होता है कि यार बड़ा घर है, सस्ता है. So yeah, it was quite cheap as well. Not really cheap, but yeah, cheaper in that segment. So like it was good. We were going through the houses. हम पूरे घर देख रहे थे. तो एक दो कमरे हम ऐसे आए जो कि बहुत स्केची थे, स्केची फिशी. जैसे कि एक कमरा ऐसा था जिसमें 2 कबर्ड्स थे and they were chained shut, like chained shut, like प्रॉपर तरीके से चेन से बंधे हुए थे. एंड उसने जो घर का लैंडलॉर्ड था, ही डिडंट केम, कोई एजेंट आया था. Okay. तो
वो एजेंट ने बोला था कि हम रेंट सस्ते में दे रहे हैं, घर सस्ते में दे रहे हैं, बस एक कंडीशन है कि आपको एक ये कवर्ड है और एक दूसरा कवर्ड है, इन दोनों कवर्ड्स के अंदर देखना नहीं क्या है। अच्छा, उन्होंने बोला ऐसा कि हाँ, खोलना नहीं है। ये खुलने नहीं चाहिए, ये दो कवर्ड है। और एक रूम था जिसमें कवर्ड था जो रेड क्लॉथ विद चेन ऐसे बंधा हुआ था। तो दैट वाज क्वाइट sketchy, बट अगेन अच्छा घर मिल रहा है, बड़ा घर मिल रहा है, तो यहीं पे प्रॉब्लम होता है। अच्छा हाँ रूम, अच्छा घर सस्ते में, लेकिन या कुछ अजीब चल रहा है एग्जैक्टली उधर। कबर्ड के ऊपर एग्जैक्टली। चेन है। हम्म। तो और जो दूसरा रूम था जो रेड क्लॉथ से बंधा हुआ था, उसमें एक और बहुत अजीब चीज़ थी कि उसके पूरे वॉल्स पे सीलिंग से लेके वॉल्स तक ब्राउन स्पॉट्स के निशान थे, लाइक स्प्लैटर समथिंग तो हमने ऐसे ही My पूछा God. कि क्या है। तो द एजेंट सेड कि कुछ नहीं, वो बच्चे होली वगैरह खेले थे, तो हम ये करवा देंगे, पेंट वेंट करवा देंगे, हम्म। ये ठीक हो जाएगा। तो ओके, देन वी डिसाइडेड टू शिफ्ट इन, सब सेट हो गया। तो द फर्स्ट डे वाज ओकेश, सब ठीक ठाक हो गया। 3-4 दिन बाद हमने, क्योंकि हम बहुत हौश पौश था, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन गुजर के जब सेटल डाउन हो गया, तो एक बहुत वियर्ड चीज़ सुनाई देती। और वो वियर्ड चीज़ थी कि हमें एक लड़की और लड़के के रोने की आवाज़ और हंसने की आवाज़ एट द सेम टाइम, दे आर लाइक लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम इन द सेम पिच। ओके। तो दैट वाज लाइक, मतलब, और ऐसा था कि सिर्फ मुझे ही दे रही है आवाज़। मुझे लगा साला पागल वागल हो गया हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही है। तो मैं क्या किया कि मतलब थोड़े दिन जाने दिया, मैं सोचा होगा, थोड़ा दिमाग खराब हो गया होगा, तो थोड़े दिन जाने दिया। उसके बाद वो बंद नहीं हुई आना, वो आवाज़ें बंद आने नहीं हुई। तो आए मेरे, मतलब जो हमारा अपार्टमेंट था, उसके घर के उसके नीचे भी एक लेवल था, एंड शी वाज अ टीचर। तो मैं सोचा कि हो सकता है इसके घर पे बच्चे आते होंगे, तो वो साले बदमाशी करते हो या जो भी है। हम्म। So I went downstairs and asked her, like I hear kids laughing, and their voice is quite loud. It's coming to, तो बोले कि मेरा तो एक्सीडेंट हो रखा है, मैं तो क्लास ही नहीं दे रही बहुत टाइम से। तो बोला ले। तो उस दिन तो मैं घर पे गया, एंड आई स्पोक टू माय पेरेंट्स, लाइक ऐसा हो रहा है, क्या करें, मतलब मुझे आवाज़ें आ रही हैं, आप लोग को आ रही। जो बोले तुम ध्यान मत दो, छोड़ो। तो एवरीथिंग वेंट साइलेंट फॉर अ मोमेंट। अब आते हैं उस रूम के अंदर जिसमें रेड क्लॉथ से कबर्ड शट था, एंड ब्राउन स्पॉट्स ऑल ओवर द वॉल, राइट। तो हमारी एक बचपन में आदत थी ना, वो ब्लेड से हम पेंसिल शार्प करते थे, राइट। या जिनके या पास शार्पनर जो सस्ता जुगाड़ रहता था, या वो पेंसिल शार्प करने का। तो मैं वो कर रहा था, तो मेरा हाथ कटा और मैंने ऐसा हाथ झटका, इट्स लाइक अ कॉमन रिफ्लेक्स, that blood came and I splattered on the wall. उस टाइम नहीं देखा, बट मैं थोड़ी देर बाद आके देखा, तो इट मेड द सेम इम्प्रेशन, सेम कलर एज द स्पॉट्स ऑन ऑल ओवर द वॉल। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि लगता है ये खून है, ये कलर तो नहीं हो सकते, खून होगा। तो अब मेरे अंदर का डिटेक्टिव जागा थोड़ा सा। तो वो जो कबर्ड था, मैंने कोशिश किया खोलने का, उसको मैंने खोल लिया कैसे भी करके, एंड आई फाउंड अ काइंड ऑफ, यू नो वो क्या कहते हैं उसको, कलश कहते हैं, जिसमें वो कुछ तो रहता है, वो रैप था एक, वो ब्रॉन्ज कलश,
and it was wrapped with a red cloth. It was there. मैंने उसको uncover किया and there was some ashes inside it. So and I'm telling you, I was so dumb. I just I checked what it is. I didn't knew what it was actually. मैंने उंगली डाल के मैं चेक कर रहा कि भाई क्या है ये. तो मेरे को उस टाइम भी नहीं पता चला क्या है. अब उसी रात जिस टाइम पे मैंने ये किया हरकत की, तो that was my study room actually. We used to sleep in different room. तो मैं जिस रूम में मैं बता रहा था मैं सो रहा था, तो वहाँ पे भी एक I told you right, a cupboard change shirt. तो I was sleeping, वहाँ पे एक विंडो था. मैं देखता हूँ वो विंडो से एक लाइट आ रही है. मैं बोला क्या है ये? I don't know, हो सकता है कोई लाइट जा रही हो, तो कोई लाइट हेडलाइट से क्रॉस होते हुए. और मैं देखा वो पास हो रही, कबर्ड पे जाती है, गायब हो जाती है. तो ठीक है, गायब हो गई, मैं सो गया. 5 सेकंड बाद वो कबर्ड फटता है. मेरे घर वाले सारे उठ जाते हैं उस टाइम पे. वो बोलते हैं कि क्या हुआ, और बिलीव मी दैट वाज चेन्ड शट. तो वो कबर्ड फटा, मतलब इतना जोर से खुला, पूरा फैन वैन सारा टूट गया, जो ऊपर सीलिंग का फैन था. तो हम उसी रात हम बैठे, हम सब बोले कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब ऐसा करते हैं कि अब चेंज करते हैं घर. तो हमने उसी के नेबर में एक और घर देखा एंड वी शिफ्टेड देयर. अब हो सकता है कि हो सकता था कि मेरी स्टोरी वहीं पे एंड हो जाती, बट इट डिडंट एंड देयर. Oh dear. Every night there used to be a woman cry outside my window Oh shit. with the loudest sobbing I ever heard in my life. It's just like मेरे विंडो के बाहर रो रही है, और मेरे इतने गट्स नहीं होते थे कि मैं खोल के देखो कौन रो रहा है. मेरी तो ऐसे फट जाती थी भाई, सीरियसली सेइंग. तो एक दिन बहुत आई हैड इट कि हर रात को हो गया था कि ये शी यूज्ड टू क्राई. एक दिन आई हैड इट एंड आई हैड टू सी हू इट इज. मैं बाहर देखा विंडो में, तो एक छोटा बच्चा खेल रहा है अकेला. सुबह के 4 बज रहे थे, अकेला खेल रहा है, गोल गोल भाग रहा है. वो टायर नहीं होता, हाँ. वो मारते हुए. उस लाइक क्या साला, इसको ये ही टाइम मिला है खेलने के लिए, सो जा जाके. तो मैं बैठा, मतलब 2 मिनट बैठा, फिर मुझे देखा यार वो टायर के साथ भाग रहा है, बट ही इज नॉट टचिंग द टायर. टायर वाज आल्सो रिवॉल्विंग विद हिम. मैं दोबारा उठ के देखा तो गायब, कोई भी नहीं. Oh एंड shit. दैट टाइम, वो जब तक मैं मुंबई नहीं छोड़ा हूँ, वो एरिया नहीं छोड़ा हूँ, every night I used to hear that woman sob outside my window. Oh crap. और अभी आप कहाँ पे हो? अभी आप पुणे चले गए हैं? अभी मैं दिल्ली में हूँ. दिल्ली में. अभी मैं दिल्ली में. I used to live in Mumbai. But did you Pune leave as well, Mumbai actually. because of this? Not actually. My dad was in bank and But he it was got still, it shifted. was happening as long as you, जब आप मुंबई में थे ये सब हो रहा था. हाँ, जब तक मैं मुंबई में था तब तक ये कंटिन्यूस होता रहा. Damn. Sir, thank you very much for that story. We have reached Panvel and come back, but very unnerving and मैं काफी invest हो गया था story में. I hope everything is good now, ना? Yeah, अभी everything is हम good. लोग खुद रो रहे हैं, मतलब और कुछ नहीं, बाकी लोग नहीं रो रहे हैं. Thank you, Piyush. Thanks for telling us that story. Okay. Yeah, Very welcome. creepy, very creepy. So thank you. Have a good one. Thank you. Don't forget to drop a link, huh? And here we have Minnie Mouse's cousin Yeah. from the Wow. Twilight Zone. I have to say that story was fantastic. Very My creepy. flight has left 3 times, Oh, but you missed your flight? 3 times.
This is the same woman outside my window, Jose. Every day she's the saying these things. I look out and I don't know who it is. It kind of feels illegal, like you're streaming from the airport. I don't know. No, it's not. That poor guy tried to tell a story and he dressed up like a nut job over there. But I great know. I mean, addition to the stream. So it is. First of all, there was a crazy story, but you didn't ask him the quintessential question, Jose ji, which yes, Suresh should have, Cyril. is where in where in Bombay was he staying? No, I'm not insane. I don't want to know where. He's saying he He left. said Goregaon. Yeah. But Cyril, now that you've done this now, live on the stream, ladies and gentlemen, we're going to watch Cyril. He's going to go to wherever the announcements are being made from, and he's going to make his own announcement to like, subscribe, as the hamster, telling I can't people. do the hamster. You know, I'm Listen, sure any YouTubers abroad now, they would have tried this. हम लोग, you know, we're good, संस्कार है and all, इसलिए हम लोग नहीं copyright incoming. Sir, madam, थोड़ा सा please announce कर दे. What time is your flight? Thank by the you. way? I don't know. No, in like another 30 minutes, 35 The minutes. next thing we hear is, क्या वो हरामी आदमी सिरिल डियाप्रियो अपना फोन बंद कर सकता है? First of all, I have to say, yes, it's another conversation. But anyway, thank you for having me, Jose, on this. And I clicked it by mistake. Yeah, thank everyone who's wished me. I can't see the chat, by the way, so Kochale. Wait, Kochale? No, Kochale. But I just want to thank everyone for the birthday wishes, and I'm sorry for all these announcements, but I live in a building society. How many announcements? It's the whole day's announcements in one go. Can I tell you something? This is supposed to be a silent airport, so I don't know. Yeah, if you put your fingers in your ears. But so, Cyril ji, Yes, sir. बड़ा cute है आप. मुझे आपको भी wish करना था. Happy birthday. Mathu. Thank you so much. Thank you so much for that birthday wish at the end of the day. तो होजी आप आज अकेला क्यों कर रहे हैं? हमारा जिगरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुरेश जी का है. काफी जिगरी है वो बॉडी. जिगली. देखिए, मैं अकेला ही हूँ. अकेले हम. आप नहीं कर पाएंगे ना अभी फिल्टर्स. वो सस्ता वाला रैट दिखा दिया आपने इधर. Try to show us the hamster. She सस्ता एकदम. Very sad. I didn't want to do no justice to hamster G, but I will do some. Another drink for my friend Mr. Cyril DiAprio, please. Thank you. अरे नहीं हो सकता है. I feel like someone's gonna this like this. People are screaming and shouting out. I don't know what's going on. देखो कैमरा ऑन नहीं है तो नहीं हो सकता. And you know Cyrus ना, he would have sent me 20 messages saying, bro, I'm in the waiting room. What the hell, bro? Come on, bring me Suresh is in the waiting room. नहीं, Suresh भी पता नहीं. Suresh is sending me all these weird pictures. Let me just show you what he sent me just now. Oh my If God. someone's at that party, please help Suresh. This is the message he sent me. Oh my God. What is going on over there? Suresh is looking like a hitman out there, dude. Cyrus, nice try. We know it's not you. Oh, Suresh, that's sad. Cyril, you can just press the button whenever you feel like. Don't wait for like an exit. You'll have to just mute me. My train is leaving. But guys, I'm not at the airport. This is my house. I have my new house. Oh yeah? Yeah, Nice. we have seating area and there might be some extras. And they make I airport don't know. announcements in your house for no reason. Oh no. Good evening, Rajni ji. It's you again. Rajni ji Again? has been, she's been on the stream. Okay. I'll mute myself till Rajni ji starts Please, talking. sir. Rajni, हम आपको unmute कर रहे हैं. Rajni ji, if I remember correctly, very casual about the ghost. She's like, अरे इधर ही इसको मैं bread खिलाया. Rajni ji, you have to press the unmute button. Me, am I audible? Yes, Spotify, Amazon Music. Hi, Jose. Hi, Happy Huku, birthday, hi. Cyril. He's I lying. It didn't was not his expect birthday. to be here. It just happened. Bilkul. Maybe I wanted to wish you more. Anyway, Rajni ji, thank you so much. You have an update for us on the ghost stories? There is an Yes, sorry, update. say. I don't know how to say that out. There is an update, yeah. Okay.
सुना सकते हैं आप, सुनाइए आप। Just a moment. I need to. ठीक है, आराम से, कोई नहीं। Still Am I obsessed. still in the meeting? Hello. Yeah, you're in the meeting. Because I can't see myself at all. I don't know where I Don't am. worry, ma'am. You're on the stream. You're live. Okay, then आप it's बाद में fine. check So कर long सकते as हैं, yeah. you guys can see me. I बिल्कुल। was just turning off the YouTube thing. Yeah, the update is I told you, like Cyril might not be knowing that I keep on seeing, not seeing, I feel the presence basically, and I believe it's my husband. Okay. So I see shadow, and I know that it's him. And the shadow happens to be like it's a white tile, and I'm doing some dishes in the kitchen, and the light coming from this side, like I'm sitting in the dining room table right now. So when I'm doing the dishes, light falls behind me, and on the white tiles I see a shadow. And but I don't get really scared because I know it's him. And when there is something good, like something good happens to me in my life, whatever achievement happens, so I feel he's there, or maybe some good cooking and all I do and his favorite thing. So recently what happened, my son had been here because he's working from home. So he used to go to the gym. I was doing the dishes, something in the kitchen I was doing, and that's the time he goes to the gym at around 8 something. And I did not really see, but I felt someone just zoom past me, behind me to the main door. And I did not really suspect that. I thought it's a normal routine. It would be my son only. What to think about? So then I suddenly remembered he'll be so mad when he gets to know. I thought that maybe we have got the laundry here, so I had just piled up all the clothes, folded and all. Let me hand him over a fresh pair of socks. So I just quickly run, close the tap, take a pair of socks, run there to see. And usually there's a sofa right here. So he sits on the sofa and he changes from his bathroom slippers to the shoes and goes to the gym. I don't see him there. So I thought maybe there's a gallery kind of a thing leading to the main entrance of the house. So maybe he's there. I go there, I don't see him there either, and the sock's still with me in my hand. So I'm wondering, where did this guy vanish? I then come back to my back. Now, if you can see, that is his room. He says no admittance except on party business. That's the sign there. So I go to his room and I find him sleeping there. He's sleeping. And I was like fully awake. I was doing the dishes and I felt someone just zoom past me. So I just shook him up. I said, "Did you just go there? Are you playing some prank on me?" He said, "No, I've been here. आपने मुझे जगा दिया unnecessarily." Like he's and the sock still in my hand. I said, "See, I ran. I just wanted to give you that fresh pair so that you can change it and go." That was the update. Wow. So your son's with you right now? He's still in the gym, yeah, but he's staying with you, all right. Though Excellent, his excellent. boss is calling him back to Mumbai, but yeah, at the moment he's here. All right. Thank you for sharing that unnerving experience. Yeah. Have a good one, Rajni ji. We'll Thank see you you. on the next one. You're good now? You guys are I'm good, right? absolutely fine. Excellent. Absolutely That's fine. fantastic. That's all we Absolutely want to know. fine. Yep, it's absolutely fine, except for this. So, All right. Yeah, so Diabrio wants to ask something. Just one moment. yeah, yes. Yeah, but Cyril- Rajni ji, thank you for now making my rest of my evening a little more afraid to travel. But I just want to say that I think it's a very sweet story. I mean, that someone cares for you. So I think that's a very enduring thing. Yes, yes. I'm sorry, they start talking. As soon as I start talking, they start talking. यात्रियों But- से निवेदन है, एक आदमी 2-3 तरबूज लेके आया है. Cyril Diabrio, please collect. I'm कीजिएगा. sorry. Thank you All so right. much, Rajni ji, for sharing that Take story. care, I'm Rajni Thank sorry. ji. you so much. Thank Bye-bye. you. Have a great flight. Thank you so much. वो You have झूठ a बोल nice रहा है, वो evening. उधर ही बैठा है. ग्रीन स्क्रीन है मैम. Green. Hi, Mr. Kawakul ji.
She's saying, तेरा फ्लाइट बुला रहे हैं जिम. अबे ये ना फोन रख और प्लेन में आओ. Yeah, I don't think it's going to be, because it's going to be non-stop Take care, bro. talking. So Have a good trip. thank you so much for having me, and thank you to the Harami chat. Sorry, I can't see the chat right now, but Nah. I will try and join the chat in a few minutes. And It'll be easier don't that worry way. about next week's ghost stories. You're fired. But I'll be able to join. I'll be in a quieter area. Okay, fine. I'm just kidding. Have a good one, man. Cheers. Lots of love to all of you Bye, guys. bro. Thank you Bye. so much. Happy birthday. Oh, it's not my Big birthday. fool. Chal, bye. Bye. Arey, she started screaming at him now. She's like, Sale, मैं कब से बोल रही हूँ, जल्दी आ. Wow, that's insane. Okay, let's keep going. Before we end tonight's stream, 23 minutes left. Thank you everyone for joining us. Harami chat, all you people send me messages saying, Jose, please scratch your nose aggressively and all. People watching me like, ये आदमी क्या कर रहा है? But don't forget, like, subscribe, although there is no reason to. And at the end of the stream, see there's like, there's subscribe, and then there's comment. Award for first comment, award for second comment, kuch to karenge. And most importantly, once this is all done, the ghost stories go on Discord. I don't know what is wrong with these people. If someone could get them help on my Discord, they just keep doing these ghost stories until 4:35 in the morning. So agar if you want to be part of that, jump into our Discord. One of our mods will drop the invite link over here in the chat at some point, or you can go to the banner on our YouTube channel and find that. Let's keep going. My God. Who should we bring on next? Somebody's going to... Okay. Dave is connecting to audio. Kidhar. Chat is funnier all the time. And something I've realized, even... Oh, Cyril and Suresh in the chat. Thank you, Nishant Nayak. It really warms my heart when the viewers themselves are saying, "Ki don't forget to like and subscribe." Idhar aao re. Let me hug you. This is virtual hug. मैं खुद को दे रहा हूँ hug. अरे रे, देव डिनर कर रहा है? देव को थोड़ा अनम्यूट करते हैं. Hello. क्या entrance music यार? Wow, that was amazing. It sounded like you had entry music. Welcome, Dev. मैं हाईवे के पास रहता हूँ तो उसकी अच्छा, वो that was a truck. Welcome, sir. किधर से बोल रहे हैं आप? मैं सेकंड फ्लोर को ऊपर जाना चाहता हूँ. Second floor से, okay. That's a good answer. सर किधर जा रहे हैं आप? चले जा रहे हैं आप बिल्डिंग का टैंकी के अंदर जा रहे किधर? नीचे आवाज आता नहीं. तो ये कांची में ना पर मैं स्टोरी बताता हूँ. तो this happened with me when I was 13. Okay. मैं स्कूल से वापस आ रहा था और वो अराउंड अप्रैल का टाइम था और राजस्थान में उधर उस टाइम बहुत गर्मी रहती है तो दोपहर के टाइम कोई बाहर रहता नहीं है वैसे. एंड मैं स्कूल से वापस आ रहा था और हुआ यूँ कि मैं घर से थोड़ा सा ही दूर था. जिस रोड से मैं आ रहा था उधर मेरे को एक बूढ़ी सी औरत दिखी और वो अराउंड 85 ईयर्स की थी. मतलब मेरे को लग रहा था देख के क्योंकि बहुत बूढ़ी सी और उसकी मतलब स्किन बहुत रिंकली थी और उसके आँख पे एक मतलब एक आँख पे उसके बैंडेज लगे हुए थे क्योंकि अब आई डोंट नो द रीज़न पर एक आँख पे उसके बैंडेजेस लगे हुए थे और वो बीच सड़क पे बस ऐसे लेटी हुई थी और ये दोपहर के लगभग 2:30 बजे हुए थे उस टाइम और रोड पे कोई भी नहीं था और बस वो लेटी हुई थी और ना बोल पा रही थी ना चल पा रही थी. बस सड़क पे लेटी हुई थी. तो मैंने उसको उठाया और वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी और वो मतलब स्टेबल मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी और वो बार बार मैं जैसे उसको छोड़ता तो वो मतलब नीचे गिरने लग जाती. तो मैंने उसको थोड़ी देर पकड़ के रखा और मैं
एक दीवार के पास ले जाके उसको मैंने मतलब खड़ा कर दिया, ताकि वो मतलब सपोर्ट के लिए, ताकि वो थोड़ी देर मतलब ऐसे खड़ी रहे। और लवली मैंने उससे लवली, हाँ। तो मैंने बात करने की अ, उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। ओके। और I'm sorry, I'm a little nervous. अरे डोंट वरी भाई, कोई नहीं देखता है इस चीज, टेंशन मत ले। And तो वो कुछ बोल नहीं पाई, और मैं मैंने मैंने ट्राई करा कि मैं उसको आगे मतलब मेरे घर के पास लेके जा सकता हूँ, क्योंकि रोड पे कोई भी नहीं था, तो और मैं किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकता था। तो मैं उसको घर तक ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। वो बस एक जगह खड़ी थी, और उसने मेरे को एक दीवार मतलब जो रोड के दूसरी साइड पे जो दीवार थी, हम्म। उस साइड पॉइंट करके कहा कि मेरे को उस साइड ले जाओ। मतलब कहा तो कुछ भी नहीं, पर उसने पॉइंट करा, तो अच्छा, मैं आपको उसको उस इशारा साइड ले किया, गया। हाँ। हाँ, इशारा किया, मैं उसको इस साइड ले गया। और मैंने उसको वहाँ पे मतलब वो दीवार के साइड वहाँ पे खड़ी हो गई, और मैंने मतलब मैंने छोड़ दिया कि मैं सोचा कि मैं घर से किसी को लेके आता हूँ, ताकि कोई तो मतलब साथ में हेल्प करके उसको घर तक ले आके आ सके। और मैंने उसको वहीं पे खड़ा छोड़ दिया, और मैं घर की तरफ जाने लगा। और फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को पीछे उठ के देखना चाहिए कि वो कैसी है, मतलब वो खड़ी है या नहीं। तो मैं जैसे पीछे देखा, तो वो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और मैं वापस उसी जगह जाके देखा कि वो कहीं आसपास है, या फिर कोई उसको लेके जा रहा है या कुछ, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। अरे और बाप रे। बस वही ये बस छोटा सा इंसिडेंट था। ओ माय गॉड, दैट्स क्रेजी। देयर इज नो वे शी कुड हैव, मतलब आपका दिमाग का दही हो गया था उस वक्त पे, या बट बस आपने ये हेल्प किया, ये सबसे अच्छी बात है। मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए 10 पॉइंट्स। शैंक शैंक, और ये ट्रक की आवाज मुझे मेरे बचपन का सॉरी याद आ सॉरी गया। आई एम नहीं, सॉरी। मजा क्या, सॉरी सर, मजा आ गया, मैं बता रहा हूँ ना, वो फील आ गया, माहौल। अरे मेरा आवाज वैसे ही अटक गया। बट सर, वेरी क्रीपी स्टोरी, और थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप वापस जा सकते ऊपर, अब पता नहीं कहाँ जंगल में चले गए आप। मैं छत पे ही आया था, मैं अच्छा, घर छत मैं पे। नीचे जा रहा हूँ वापस। चलो, ठीक है, बढ़िया, वो गुड वन। बाय 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 ब्रो। बाय। एटलीस्ट ही हेल्प्ड यार, दैट्स अ नाइस थिंग, अच्छा काम किया उसने, अच्छा काम किया। अरे बाबा, 16 minutes left. वह somebody had a very funny name for Waldman. क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग चैट में, मेरे को हंसा रहे। You know how tough it is to keep a straight face and read the chat and listen to the story. और तुम लोग को पता भी नहीं है, एक दिन हम लोग behind the scenes करेंगे. I have to keep stabbing myself in the leg to stop. All right, here we go. Let's keep going. Sanat says somehow this is the best story so far. As you know, sometimes it's a go, sometimes it's she. These streams are just excuses to pollute the internet. ज्यादा कुछ करते नहीं हम लोग इधर। मिथिल, मिथिल, चला, बुरगीर, no, Burjir. Today we got Burjir. Thank you, Errol Krasta. Hey, partners avlaz, man. Have me permission to laugh and all. Just disconnect me saying, man. कुछ भी, मिथिल, कुटिल किधर? Mithil taking his time. Let's move on. There's no BTS. Yeah, it's a live stream, Brendan. कुछ भी. Mithril. अरे, The Rings of Power का Mithril, Jaideep. Burjir. Oh God, now this stupid word Burjir will be stuck in my head for the next few days. Dhanraj, Mithil, Kuthil, एक नंबर पेन है, स्कैरी जिन स्टोरी. मिथ्रिल इज एक्सपेंसिव. स्कैरी जिन स्टोरी. अरे सर, आपको हम याद करें, लाइटिंग चेंज करके, अब वी स्टिल रिकॉग्नाइज यू सर, वी रिमेंबर यू सर. मित्रांदेल, मित्रांनो,
Hey Mithril. All right, Burjir log, stop saying Burjir, guys. I won't be able to stop saying it. My wife is already fed up of me. I'm saying Burgir the whole of last week. Put in Mithril. Durian will give you Durian. Durian is the fruit. All right, Dhanraj, आपको भी bye. Scary gin story. Here we go. अरे हेलो आवाज आ रहा है? super breathing entrance आ गया sir. Welcome. आवाज आ रहा है? Yes. Have you been captured by someone? क्या चल रहा है? अरे नहीं, वो जाली है. Okay, good, good. Because if you need help, बहुत सारे लोग हैं. We'll come and rescue you. श्योर श्योर, नेक्स्ट टाइम आपकी स्ट्रीम पे आऊंगा. Okay, कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान से. Rajasthan, lovely. Oh, are you giving us a Rajasthan ghost story or this is from somewhere else today? नहीं, वो एक फ्रेंड का स्टोरी है. ऑलरेडी Okay. मैं स्ट्रीम पे आ चुका हूँ एक बार. I know, sir. मैं अ, वही मम्मी मम्मी भी आई थी. मुझे याद है, मुझे याद है. आपका स्वागत एक और बार. सुनाइए सर. रेटिंग क्या देंगे आप? रेटिंग 7 और 6. 7 और 6. ठीक है. The chat will ठीक है. decide. Take it away, sir. Sure. तो बेसिकली स्टोरी मेरे फ्रेंड ने बताया था, उनके फैमिली में हुआ था. तो हुआ क्या था एक्चुअल में, एक स्कूल टाइम में, एक कॉलेज टाइम में कपल था. तो वो मतलब थे, और उसके बाद सीनियर था, एक बॉय वाज सीनियर और गर्ल जूनियर थी. तो लड़का का सब हो गया, ग्रेजुएशन और उसको जॉब मिल गया. तो वो आउट ऑफ इंडिया चले गया था, कतर साइड, दुबई कतर. उसको बैंकिंग में कुछ मिला था. तो उनका लॉन्ग डिस्टेंस चलता था, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 महीने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था. तो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में बात बात होता था, वीडियो कॉल एंड ऑल. सो वन डे लड़की ने डिसाइड करा कि लड़की बोली कि वो सरप्राइजिंगली मिलने आ गई उसको. इससे उससे कतर में मिलने चले गई इंडिया से. तो इसने इसको अच्छा लगा कि सरप्राइज दिया. तो एक वीक तक मिली वो, और उसके बाद रिटर्न इंडिया चले गई. तो ये बहुत हैप्पी था. तो उसके बाद जैसे ही वो गई ना, तो इसको अचानक इसने फोन चेक करा. तो इसको एक मतलब देखा कि इसकी जो मतलब वो गर्लफ्रेंड का जो पूरा कांटेक्ट सब था, हर जगह से ब्लॉक था. कॉल ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, इंस्टा पे हर चीज ब्लॉक था. तो इसको वियर्ड लगा. इसने बोला मे भी कुछ बुरा मान गई होगी, और ब्लॉक ऐसे कुछ पहले का ब्लॉक होगा. तो इसने ऐसे मतलब इग्नोर करके अनब्लॉक, उससे अनब्लॉक सब बोला उसको. तो फिर अनब्लॉक सब हुआ उसकी किसी दूसरी फ्रेंड से बात करके. तो नॉर्मल हो गया, फिर सब चल रहा था. तो एक दिन ये बोला कि ऐसे बातों बातें बोला, तुम उस टाइम मेरे से एक वीक के लिए मिलना आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे मेमोरीज के टाइप. तो वो लड़की बोले कि मैं कब आई थी, क्या बोल रहे हो तुम, मैं तो थोड़ी ना आई थी कभी. तो इसने सोचा कि अरे मजाक कर रही है, तो इसने इग्नोर मारा उस चीज को. मतलब ऐसे मजाक में बोल रही होगी कि मैं तो आई नहीं. तो ये चीज खत्म हुआ. उसके बाद नॉर्मल उनका चल रहा है. उसके बाद क्या हुआ कि उन उस एक और बात यही सेम चीज उसने बोला थोड़े टाइम बाद, कि यार वो क्या तुम वापस कभी मैं आऊंगा, मिस कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, उस टाइम तुम आई थी तो बहुत मजा आया था, ऐसा ऐसा हुआ. तो उसने इसको इस पर लड़के को गुस्सा आ गया कि ये 2-3 बार इसने ऐसे बोल दिया कि मैं तो आई नहीं कभी. तो इस लड़के ने बोला, लड़की ने बोला मैं तो आई नहीं कभी, तू क्या बोल के जा रहा है. तो लड़की ने मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप का घर पे भी पता चल गया था. तो नॉर्मल था. तो घर पे दोनों ने पूछा कि क्या क्या मतलब ये क्या. तो उन्होंने किसी से पूछवाया. तो बाद में पता चला कि किसी ने, लड़के के रिलेटिव ने कुछ एक जिन भेजा था वो लड़के के पास. तो वो सब उसने कुछ करा था. तो उसका लड़के को एकदम टेंशन में आ गया. तो घर पे उसके जिन बाद भेजा था. मतलब उसको वहां पे मिलने के लिए कुछ जिन गया था. एक्चुअली इट वाज नॉट द गर्लफ्रेंड. Okay. तो इसलिए वो ब्लॉक सब हुआ था. उसके बाद आगे क्या हुआ कि उनका शादी का सब प्लानिंग हो गया. तो उनका शादी हो गया था कुछ 5-6 मंथ्स बाद उनका शादी हो गया था. वो मुस्लिम में थे, तो उनका थोड़ा अर्ली शादी हो गया था. दोनों फैमिली वाज राजी था. तो शादी हो गया था उनका. शादी होने के बाद कुछ 1 और 2-3 मंथ्स बाद उनका प्रेगनेंसी का न्यूज़ आया, लड़की का. Obviously, yeah. तो है. तो वो कुछ ट्विंस था, वो ट्विंस था. और कुछ मतलब लड़की फिर लड़की ना फॉरेन चले गई थी, मतलब शादी के बाद सेटल हो गए थे वो लोग आउट ऑफ इंडिया, कतर में. तो लड़की वापस प्रेग्नेंट थी, तो घर पे आई वापस, मम्मी के वहां पे रहने लगी, उसकी लड़की की मम्मी के साथ.
तो लड़की कुछ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स बाद ना वो ट्विंस का मिसकैरेज हो गया। Oh no. ठीक है। ठीक है, मिसकैरेज हो गया तो लड़के को बहुत शॉक हुआ, लड़की को भी फुल मतलब बहुत शॉक हुआ, तो डिप्रेशन में तो चले गए ऐसा सब। तो ये जो लड़के ने ना लड़की की लड़के ने अपनी मम्मी को कॉल करके बोला कि आप उसको इधर भेज दो ताकि मेरे साथ रहेगी तो थोड़ा सा बेटर फील करेगा ऐसे ऐसे। तो उसकी लड़के के मम्मी ने अरेंजमेंट सब कराई लड़की को वापस उसके पास भेजने के लिए कतर। तो ऐसे ही चला। तो बाद में पता चला कि वो चीज भी किसी फैमिली मेंबर ने उनके ऊपर कुछ जादू टोना टाइप्स करा था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसकी मम्मी की फैमिली, जो लड़की की मम्मी है ना, उसकी फैमिली में किसी को उस शादी से वो था, प्रॉब्लम था। Oh. तो ऐसा कुछ करा था। तो कुछ टाइम बाद ना वापस शी गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर लाइक 5 to 6 months। तो इस बार इन्होंने ये न्यूज किसी को नहीं बताई, पिछली बार सबको बताई थी, अब तो किसी Oh, को okay. बताई नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है। तो इस बार किसी को नहीं बताए कि इस बार बेबी सब हो जाएगा, सब पूरा अच्छे से हो जाएगा नॉर्मल, उसके बाद उसके बाद ही बताना। अपन बताएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हो गया, बेबी सब हो गया। उसके बाद इन्होंने इस लड़के ने सबसे पहले लड़की की मम्मी को कॉल करा। इसकी लड़की की। तो लड़की की मम्मी कॉल उठाई और इसने बोला सब कि ऐसे गुड न्यूज ऐसे सब। तो लड़की की मम्मी कुछ बोली नहीं, चुप थी। तो इनको लगा कि मे बी नाराज हो गया किस बात पे ऐसे ऐसे, तो कुछ चुप थी। तो कुछ नहीं, इसने कॉल करके करके लड़की की पापा को लगाया, ससुर जी को। तो इसने ये सब बताया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, इस बार सब कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं था, मतलब सब दोनों हेल्थी है ऐसे ऐसे। तो लड़की के पापा बहुत चिल्लाने लगे कि क्या बोल रहा है तू ये, वो तो कब की, जब उसका ट्विंस का मिसकैरेज हो गया था उसकी डेथ तो तभी हो गई थी लड़की की। और इसकी तो यहाँ पे फट गई, क्योंकि ये उसी घर में था जिस घर Oh में shit. वो दोनों थे। और ये उधर से चुपचाप ना अपने फ्रेंड के घर पे गया, उसी कंट्री में जो फ्रेंड था उसके घर पे गया, उसको पूरा इंसिडेंट बताया उसने कि ऐसा सब हुआ ब्रो, ये सब कुछ कर। तो उसके फ्रेंड ने पहले सबसे पहले एक आलिम, मे बी प्रीस्ट को जैसे आलिम, एक आलिम का नंबर दिया उसको 2323. कि ब्रो, आलिम का नंबर दिया कि मतलब वो एक प्रीस्ट होता है, Bro. मुस्लिम्स में आलिम बोलते हैं। तो उसके बाद ना उसने आलिम का नंबर दिया, तो ये आलिम और उसके साथ सब घर पे गए। तो घर के अंदर घुसने नहीं दिया, उस आलिम ने बोला कि तू घर के अंदर मत जा, क्योंकि ले उसका कनेक्शन तेरे साथ ही है। तो वो घर के अंदर बाहर ही था, और आलिम के साथ कुछ असिस्टेंट सब थे, 2-3 लोग उसके, आलिम के। तो वो लोग घर के बाहर ही खड़े थे, मतलब से बाहर का कुछ गार्डन टाइप एरिया था, वहां पे खड़े थे, वो घर के अंदर था। तभी ना वो अंदर से भाग कर आई, उसकी पत्नी या जो भी थी वो अंदर से भागकर बाहर नहीं आई, दरवाजे के अंदर ही खड़ी थी और बोली कि आप अंदर आओ, देखो बच्चे को कुछ हो रहा है, वो ढंग से सांस नहीं ले रहा है ऐसे ऐसे। Oh तो shit. इस ये वो आलिम बोला नहीं नहीं तू अंदर मत जा। तो वो वापस चलेगी भाग के अंदर, पूरा मतलब ऐसे, मतलब वो फेक कर रही थी शायद। तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि ये चीज अपन को कुछ करके यहाँ बाहर से सॉल्व करनी पड़ेगी। और फिर इन्होंने ना इसको, लड़के को कॉल आया कि वहां पे इंडिया में इसकी मम्मी घर से भाग गई है, लड़के की मम्मी। तो इसको बोला अच्छा. कि अरे यार, उधर भी टेंशन इधर भी टेंशन, Oh अब दोनों no. तरफ क्या करूंगा। तो इसने क्या करा, थोड़े कुछ वो जो प्रोसीजर था ना वो 1-2 दिन का था। तो हर दिन उनको उसके घर पे, लड़के के घर पे जाके वो आउट ही, बाहर ही, घर के बाहर से ही कुछ करना था उनको, मतलब मंत्र वंत्र जो भी था उनका प्रोसीजर वो करना था। और उधर इंडिया में उसकी मम्मी ना मिल गई कहीं पे, और उसकी मम्मी पूरा कंडीशन में नहीं थी, अच्छे मतलब कॉन्शियस नहीं थी, कहीं मिल गई थी उनको मम्मी, और उसको कोमा में रखा था। फिर आलिम ने कुछ 1-2 दिन बाद उनको पता चला कि जो इसके पीछे ये भेजा है ना, जो भी जिन और समथिंग, वो उसकी मम्मी ने भेजा था। सो उसकी मम्मी ने भेजा था, और ये चीज पता चल गई ना, तो इट गेट्स बैक टू यू, लाइक जो भी ब्लैक मैजिक होता है ना, Oh, इफ इट okay. ब्रेक्स डाउन तो उसकी मम्मी पे उल्टा आ गया वो। तो आफ्टर लाइक 10 days उसकी मम्मी की डेथ हो गई, बिकॉज इट गॉट ऑल, मतलब वो यहाँ पे उन्होंने आलिम ने सब इफेक्ट करा ना, तो वो चीज उल्टा उसकी मम्मी उल्टा को, उनके ऊपर आ गया, बाप रे. हाँ वो Oh उल्टा, और shit. यहाँ पे वो, तो ये जिन का जो उसके ऊपर, मतलब जिन को ये करके रखा था कि बेटे को कनेक्शन में रहना है तुम्हें, मतलब बेटे को कंट्रोल करके रखना है। तो ये चीज उन आलिम्स ने जो भी तंत्र मंत्र करके वो सिर्फ सॉल्व कर दिया, और पूरा मतलब वो पूरा घर सब छोड़ के वो रिलोकेट हो गया उधर से। भाई क्या स्कैरी स्टोरी था ये. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू. सो चैट में कुछ लोग बोल रहे थे वाइफ ऑल डैडी डेड, वाइफ ऑल डैडी डेड. बट देन व्हेन यू सेड इट आई वाज लाइक हाँ.
क्या इसलिए मैं जिन नहीं पीता हूँ. Anyway, sir, thank you so much for sharing that with us. Very freaky and unnerving. So thank you. थैंक यू, बाय. You saved the stream, sir. ठीक है, बचा लिया आपने मेरा स्ट्रीम को. मैं आभारी रहूंगा पूरा लाइफ के लिए. Well, I'm not sure of how. Oh, geez, I'm not sure what to think about that story, man. Ah, I just want to say, कुछ लोग बोल रहे थे चैट में कि प्लॉट होल्स है स्टोरी में. आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, बुरजिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखिए, ये गोस्ट स्टोरीज है. आज तक किसी के पास एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, तो मतलब थोड़ा आप चीनी डाल के समझ रहे आप. हाँ, प्लॉट मतलब ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चल रहा इधर क्या. हाँ, सर्किट क्या बोलते हैं वीडियो. वॉल्डेमॉर्ट डूइंग अ नकल ऑफ संजू बाबा. क्या रे. What's wrong with me? All right, let's go. 2 minutes to go for the stream to end. I could do what my heart is telling me and just end the stream right here. But we'll take one more story. Don't forget to hit like and subscribe. बाप रे, कोई कब से निशांत is more worried about the likes than me. This is why. निशांत इधर आओ. छोड़ यार, मर जाएंगे तो क्या करेंगे. ये सब लाइक्स का अचार बनाएंगे. छोड़ो. But don't forget to like and subscribe. Apparently one more story for 1K likes. ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं. I cannot stop laughing. That's so dumb. Okay. Final story for the night, ladies and gentlemen. I want to say a big thank you to I think his name is Raj Mathur, the guy who made today's artwork. He had made previous artwork also, but he had also made this solo one. So I figured कि हम solo stream कर रहे तो डाल देंगे. What amazing artwork. Everybody on our Discord server. I cannot thank you enough. तुम कितना सब हीरो लोग हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर में. आ जाओ वहाँ पे, कम जॉइन. बिग थैंक यू टू ऑल आवर मॉड्स ओवर हियर एंड हरामी चैट ऑफ कोर्स. Without you, it would not look like I'm always trying to burst out in laughter. Final caller for the day. Final Zoomer. Somebody has named themselves Bathroom Ghost over here. That is a surefire way to not get picked. Oh my God. Dear God, Swati. क्या कर रहे हैं आप स्वाति जी. Is this how we're going to end today's stream with Swati scaring the crap out of us? Swati ji, पास में आओ. हम okay, we can see you. लाइट बंद हो गया कि लाइट नहीं है घर पे. ओके, ना मैंने बंद किया है. बंद किया है, ठीक है. ओके, आप हो ना वहाँ पे, ठीक है. यस, मुझे पता था, इसलिए मैं लास्ट मोमेंट में ज्वाइन हुई. ठीक है, डराना नहीं है स्वाति जी. आप मतलब डराना ही है. यू हैव अ गोस्ट स्टोरी. क्या है? यस, आई हैव अ गोस्ट स्टोरी. रेटिंग 7-8 काइंड ऑफ. 7-8, ठीक है. 75%. सो ये अभी रिसेंटली हुआ है, मई या जून में, मेरी फ्रेंड के साथ. तो अभी सब लोग 15-20 मेंबर्स कुछ गोवा गए थे, सब वाया फ्रेंड्स, ऐसे सब ग्रुप्स मिलके. तो फिर मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है वो, सो वो लड़की भी गई थी. तो वो आने के बाद ना बहुत सी मतलब कट ऑफ कर ली थी उसने सोशल लाइफ से, सोशल मीडिया से, एंड लाइक ओनली जॉब एंड घर, और बहुत साइलेंट हो गई थी. और फिर वो जब से आई है ना, उसके 2-3 दिन के बाद से ना, वो जब भी रात को सो के उठती थी तो उसको ना छोटे छोटे ऐसे रैशेस होते थे, पैर में कभी, हाथ में कभी. जैसे हम कभी स्क्रैच करते हैं बॉडी को तो हल्के से जो निशान पड़ जाते हैं ना लाइन से, हाँ, वैसे टाइप के होते थे. तो वो बहुत ही इग्नोर की, बहुत ही. फिर उसके घर वालों ने मतलब नोटिस किया कि ये पहले ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, ऐसा क्यों करके बहुत डॉक्टर्स के पास लेके गए एंड ऑल, कुछ हुआ नहीं. मे बी वो मेंटली कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. देन कुछ दिनों के बाद किसी ने उनको बताया, पता नहीं कैसे, कि वो जो ट्रिप में गई थी ना, वहां पे कुछ डिस्टर्बिंग हुआ है करके, वो जो ट्रिप में गई है. और उनके घर वालों को पता नहीं था कि ट्रिप में कितने लोग गए, कौन लोग गए, क्या गए करके.
उनको पता था कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स है 4-5 लोग, बस वो लोग ही गए करके, और बाकी कुछ नहीं पता था। फिर बाद में इंक्वायरी निकालने के बाद पता चला कि इसके ग्रुप में एक जो लड़की थी, उसका एक फ्रेंड था, और मतलब फ्रेंड, लाइक इनके ग्रुप की मेरे फ्रेंड जो थी, और एक सेकेंड, मैं मतलब हमारे ग्रुप जो 4-5 लोग थे, उसमें वो लड़की की एक फ्रेंड था, बॉय। वो ट्रिप में थोड़ा क्रश टाइप, अट्रैक्शन टाइप हो गया, तो वो लाइक करने लग गया था, बात पे ज्यादा क्लोज होने के लग गया। तो उसका जो फ्रेंड है, लड़की है, शी इज इनटू दिस विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक्स, ये टाइम पे भी। और शी इज लाइक मे बी हो सकती है 26-28 के बीच में ही होगी वो लड़की। सो उसने कुछ किया है ऐसे करके पता चल, जस्ट इमेजिन। अभी से कभी भी किसी के साथ अननोन के साथ ट्रिप पे जे नहीं जाना चाहिए, मैं अकेला लिटरली। भी नहीं जाता हूँ, छोड़ो वो दूसरे लोग पता के है साथ। मुझे, बट वाओ, वहाँ फ्री की स्टोरी यार। ठीक है तो, लिटरली। बट अभी सब ठीक है कि क्या चल हाँ, रहा है? अभी वो थोड़ा मूव ऑन हो रही है, ते अभी तो ठीक है, हो रही है, अभी तो हुई नहीं है। रिलेशनशिप के चक्कर में ना क्या क्या चलता रहता है आजकल, क्या बताऊं आपको। एंड बट नो anyway, वन नोज अबाउट इट, नो वन। अभी पता तो नहीं ये लोग को पता चल गया है जो देख रहे हैं इधर अभी तो। पहले आ जब प्या होता था। बच गया। ऑलराइट, थैंक यू सो ओके, मच स्वाति, बाय वेरी बाय, क्रीपी थैंक यू। स्कैरी स्टोरी। और प्लीज लाइट ऑन कर देना प्लीज, डराएंगे नहीं आप नहीं, लोगों को। ऐसे स्पूकी आपका होता है नेबर ना। अब अगर देख रहा हो इस वक्त, देन ही कैन ओनली सी योर फेस, वो डर जाएगा ना। एनीवे, थैंक यू स्वाति, एटलीस्ट यू आर या, सेविंग बाय। इलेक्ट्रिसिटी एंड मनी। यस। Helping people save electricity over here on the ghost story stream. Yes, yes, some good questions coming in the chat. 2332 is not a thing, guys. We're going with just the numbers. So 10, 10, 11, 11. Please don't try to change the rules. I don't make them. I don't know who makes them. This is it. The end of tonight's stream. Thank you, everyone who came and listened to the stories. इसके पहले वाला स्टोरी ने मेरा वाट लगा दिया है। मेरे सिर पे अभी बाल उगने लगेगा और मैं अपना नाक से सांस ले पाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा जो मॉड्स है उनके लिए तालियां। अरे मेरा हाथ नहीं दिख रहा इस तालियां। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द हरामी चैट। क्या क्या अच्छे अच्छे, कुछ तो बहुत अच्छे नहीं जोक्स हमारा चैट में, जो मेरे को आप लोग मेरे को हंसाते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। तो मैं वल्डरमंट जी घाटकोपर से बोल रहा हूँ, शुक्रिया। यस, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम। आप लोग मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, मेरा चैनल है, करना पड़ता है ये सब। प्लीज स्टॉप सेइंग भुर्जीर, आई बेग यू। प्लीज भुर्जीर मत बोलना। Oh god, I said it. Anyway, that's it. Thank you, mods. Harami chat. A big round of applause to Suresh Menon, Cyril Diabrio, Talia. Dekho, even in the craziest times, they do try to come here and ruin the stream, even from when they are not here officially on Zoom. So big round of applause. What did I just say? Applause for them. Come over to the Discord. Aao Haveli mein. I'm going to press the button now. It's kind of tough to do a end credit scene with just myself. So that's it. I will see you. Oh no, Akshay. Akshay, kya kar diya? Thank you, Akshay. Hi, it's me, Cyril. Akshay Nikam, sleep well, Joshi ji. Thank you. Love you. Cyril doesn't look like that. That's really unfair. Cyril looks like this. Hi da. Sir. Thank you, everyone. Discord में आ जाना. Burgir, Burjir, pressing the button. Good night. I'll catch you next week. And you know the deal, na? Instagram, either udhar, comment. Where next week, don't skip. What? Let's see. We'll think about it. Cyril के Instagram पे, सुरेश के Instagram पे, Cyrus के Instagram पे, वो ऐसे ही किधर है भाई, कब से 2 साल हो गया, कुछ तो बोल देना उनको। एंड अपना भी Instagram में आके आप एक दो कुट लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह। डोंट फॉरगेट to like, subscribe over here on YouTube. Like, subscribe, comment. So I think it is possible to do an post-credit scene. I was not looking at you guys in the eye
when I said bye. So that's kind of wrong. I should not have done that. But thank you, everyone. You have witnessed another episode of Ghost Stories. Have a good weekend. Purjir.